दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका इंडियन रेलवे के जीडीसी एलडीसी पेपर के। आज का जो टॉपिक है वो है पास रूल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो दोस्तों जो साउथ ईस्टर्न रेलवे से जो लड़के हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए अच्छी खुशखबरी है जो मैं अपने वेबसाइट www.chandramoleshwar.com पे भी डाल दिया हूँ। वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन आपका आ चुका है कि आपके लिए मार्च 24 को नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। अप्लाई कर सकते हैं, 1 महीने का टाइम मिलेगा। अप्रैल में और मई जून तक शायद एग्जाम हो जाएगी। तो बहुत कम समय है और इन कम समय में आपको नौकरी के साथ साथ प्रिपरेशन भी करना है। तो चलिए आपके साथ देने के लिए मैं हाजिर हूँ, इंजीनियर सीएम झा, अपने यूट्यूब चैनल सीएम झा एकेडमी पर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर पूरी वीडियोस को देखिए। आपको बिल्कुल पसंद आएगा और वीडियोस के साथ बने रहिएगा। आपके लिए मैं रेगुलर ऐसे ही आपके सिलेबस के आधार पर टॉपिक लेके आता रहूंगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पास रूल का। Gazetted staff having completed 20 years and more but less than 25 years of service are entitled to get post retirement pass at the rate। आपका जो पोस्ट रिटायरमेंट पास है, दैट मीन्स कि रिटायरमेंट के बाद जो रेलवे कर्मचारियों को पास मिलती है, उसी पास को हम पोस्ट रिटायरमेंट पास के रूप में जानते हैं। तो इसमें जो गजेटेड स्टाफ है और जो नॉन गजेटेड स्टाफ है उनके लिए अलग अलग रूल है। और गजेटेड स्टाफ नॉन गजेटेड स्टाफ के साथ साथ एक और रूल है कि उन्होंने अपने सर्विस लाइफ में नौकरी कितना दिन किया है। तो यहाँ जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि 20 साल वो नौकरी कर चुके हैं बट लेस देन 25 ईयर्स, और लेकिन 25 साल पूरा नहीं कर पाया। तो आप जान लें कि जो गजेटेड ऑफिसर हैं और उन्होंने अगर 20 साल की नौकरी पूरी कर ली है, 25 साल से कम किया हुआ है, तो उन्हें 2 सेट पर एनम पास मिलेगा। और पास की जो कैटेगरी है वो वही होगी जो उनके रिटायरमेंट के टाइम पे था। सेकेंड क्वेश्चन है कि सेम गजेटेड स्टाफ हैविंग कंप्लीटेड 25 ईयर्स, अगर वो 25 साल पूरा कर लिए हैं तो उन्हें 3 सेट पास मिलेगा, 3 सेट पर एनम, सेम कैटेगरी जो रिटायरमेंट के समय था। परंतु अब बात आती है अगर वो ग्रुप सी स्टाफ था, ग्रुप सी स्टाफ हैविंग कंप्लीटेड 20 ईयर्स बट मोर देन एंड मोर बट लेस देन 25 ईयर्स, लेकिन वो 25 साल से कम है, तो वहां पे जो गजेटेड ऑफिसर थे उन्हें देखेंगे आप 2 सेट था और जो नॉन गजेटेड है उन्हें 1 सेट पर एनम मिलेगा। और अगर ग्रुप सी स्टाफ 25 ईयर्स पूरा कर चुके हैं तो गजेटेड ऑफिसर में 3 सेट था, यहाँ इन्हें 2 सेट पर एनम मिलेगा। बस इतना सा ही अंतर है। नेक्स्ट, अगर वो ग्रुप डी स्टाफ है और उन्होंने अगर 20 ईयर्स पूरा कर लिया लेकिन 25 साल पूरा नहीं किया, तो ग्रुप डी स्टाफ के लिए ये अच्छी खबर नहीं है कि अगर आप 25 साल से कम नौकरी करते हैं और रिटायर्ड हो जाते हैं तो आपको कोई भी पोस्ट रिटायरमेंट पास फैसिलिटी नहीं मिलेगा। नौ, ग्रुप डी स्टाफ अगर 25 साल पूरा कर लेते हैं तो उसे 1 सेट पर एनम मिलेगा। नाउ the widow mother of the retired employee shall be included in the post retirement complementary pass। अगर आपकी माँ विडो है और आप नौकरी से रिटायर कर गए हैं तो आपकी माँ को भी एज ए अदर फैमिली मेंबर जैसा आपको पास का फैसिलिटी मिलेगा। अगर विडो कम्प्लीमेंट्री पास में बी इशूड टू ए विडो हुज हस्बैंड वाज रेलवे एम्प्लॉय, अगर कोई विडोज की हस्बैंड रेलवे एम्प्लॉय था और उन्हें कम्प्लीमेंट्री पास तभी मिलेगा जब वो सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं कि उनका हस्बैंड आइदर एक्सपायर्ड और मिसिंग है, या तो वो एक्सपायर कर चुके हैं या फिर मिसिंग है, तो फिर आपको जाएगा। रिवाइज्ड पे लिमिट फॉर इशू ऑफ फर्स्ट क्लास ग्रीन पास, तो रिवाइज्ड पे लिमिट जो 7th पीसी है उसके हिसाब से फर्स्ट क्लास ग्रीन पास उनको मिलेगा जो PV6 में नौकरी कर रहे हैं या ज्वाइन कर रहे हैं। दिस इज द अप्रो ग्रेड पे फुट है वो 4200 ग्रेड पे से शुरू होती है। और एम्प्लॉइज अपॉइंटेड PV2 टू PV5, अगर आप PV6 से नीचे हैं यानी PV2 और PV5 तक है तो आपको फर्स्ट क्लास एलो पास दिया जाएगा। दिस इज द सेकेंड क्लास एलो पास, नॉट फर्स्ट क्लास। ऑप्शन सी सेकेंड क्लास, ऑप्शन बी सेकेंड क्लास एलो पास दिया जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, फर्स्ट क्लास ए एलो नहीं होता है, सेकेंड क्लास एलो पास दिया जाएगा। सेकेंड क्लास जो है वो ए का ही है परंतु एलो पास है वो। इन द रेसिडेंशियल कार्ड पास ए पर्सन कैन बी अकम्पनीड एज, अगर जो रेसिडेंशियल कार्ड पास है
उसमें एक पर्सन अकॉम्पनीड कर सकते हैं। तो आप एक चीज जान लें, जो रेसिडेंशियल कार्ड पास होता है किसी भी ग्रुप सी या ग्रुप ए राजपत्रित या अराजपत्रित अधिकारी का या स्टाफ का, फैसिलिटी आपको प्रिविलेज पास में दिया जाएगा, वो सारी फैसिलिटी रेसिडेंशियल कार्ड पास में भी मिलता है। लाइसेंस्ड पोर्टर्स, जो पोर्टर्स हैं, जो लाइसेंस्ड पोर्टर्स हैं, उन्हें भी एक सेट कम्प्लीमेंट्री चेक पास उनके खुद के लिए फॉर सेल्फ, और एक सेट प्रिविलेज ऑर्डर पर ईयर सेल्फ और स्पाउस के लिए उनको मिलता है। नाउ अगर फैसिलिटी ऑफ ए कंपेनियन विल बी प्रोवाइडेड ऑन द पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास होल्डर ऑफ, रिटायरमेंट के बाद किनको कम्प्लीमेंट्री पास में जो आपका किसी एक को ले जाने के लिए कंपेनियन करने के लिए मिलता है, दिस इज द फर्स्ट एंड 1A पास। जिन्हें फर्स्ट क्लास और या 1A पास मिलता है उन्हें ही साथ में किसी को अकॉम्पनी कर सकते हैं। अटेंडेंट एज ए डिफाइंड एज ए पास रूल मीन्स, अटेंडेंट को पास रूल में कैसे डिफाइन किया जाएगा। अटेंडेंट वो है ए पर्सन एक्सक्लूसिवली एम्प्लॉयड ऑन सैलरी इन द पर्सनल सर्विस ऑफ ए रेलवे सर्वेंट। जो रेलवे सर्वेंट हैं जिनको अटेंडेंट ले जाने की अथॉरिटी मिली हुई है, वो व्यक्ति उस पर्सन को अपने लिए अपने सैलरी पर रखा हुआ है। दिस इज द अटेंडेंट। Now, one post-retirement complementary pass should be stopped for each month or part thereafter with 10 days of authorized occupation of railway quarter। अगर आप रिटायर्ड हो चुके हैं परंतु आपने क्वार्टर ऑक्यूपेशन वैकेट नहीं किया है, अगर आपने क्वार्टर वैकेट नहीं किया है तो आपके पोस्ट रिटायरमेंट कंप्लीमेंट्री पास को स्टॉप कर दिया जाएगा। One widow complimentary pass should be stopped for each month or part thereof the 10th authorized occupational worker। सेम विडोज के केस में भी है, अगर रेलवे सर्वेंट की मौत हो जाती है, आप विडोज हैं, तो आपके पास कम्प्लीमेंट्री पास शुड बी स्टॉप मंथ ऑफ पार्ट 10 डेज ऑफ ऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन। 10 दिन का ऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन पे आपका कोई भी रेलवे सुविधा, क्योंकि उनके साथ मर्सी दिखाई जाती है, अगर आप रेलवे सर्वेंट हैं और तो आपकी अगर मौत हो जाती है तो आपके विडोज को सारी फैसिलिटी 2 साल के लिए मिलती है। ना तो उन्हें क्वार्टर रिटेन अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन माना जाता है और ना ही उनसे कोई भी पास या सुविधाएं तुरंत रेलवे के द्वारा ले ली जाती है, उन्हें मौका दिया जाता है संभलने का। Now inclusion of divorced and widowed daughter in post retirement complementary pass is allowed। अगर आपका डाइवोर्स या विडो डॉटर है तो पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास में वो अलाउड रहेगा। व्हाट विल बी द कलर ऑफ सेकेंड क्लास एसी पास, दिस इज द येलो कलर। ये आपका 6PC के लास्ट टाइम में था कि आपके पास सेकेंड क्लास ए पास, दिस इज द येलो कलर। पेमेंट 2000 से लेके 2800 तक जो PB2 PB3 PB4 PB5 है वहां पर ये सेकेंड क्लास के पास आपको मिलेगा। तो दोस्तों आपके लिए जो कुछ इस क्वेश्चंस के आधार पे मैंने पास रूल के आधार पे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस इसमें निकाले थे, ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था, शायद आपके एग्जाम्स में बहुत ही फायदा होगा। आपके लिए बहुत ही शुभकामनाएं, आप प्रिपरेशन करें, तैयारी करें और आगे बढ़ें। मैं आपके लिए फिर लेके आऊंगा क्वेश्चंस की कड़ी में GDC LDC के लिए, जो ऑपरेटिंग SNT CNW इलेक्ट्रिक या लोको के साथ में जितने भी ग्रुप D टू ग्रुप C या ग्रुप C टू ग्रुप B या ग्रुप C टू ग्रुप C के एग्जाम्स होंगे, उनके लिए सारे क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेके आऊंगा। आप चैनल के साथ बने रहें, दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितना अधिक हो सके इस वीडियोस को आपस ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। Hi James, now you need to. Hello everyone, welcome to the webinar Tech for a Better Planet.
My name's James Hardcastle, and I'm with IUCN's Global Protected Areas Program, based here in Switzerland. And it's my honor to moderate the webinar today for you all. And I'd like to thank Huawei for their initiative. As we will hear from our speakers, today's webinar discussion specifically on how technology can help us secure our natural environment for a better planet. So the webinar will explore how innovative digital technologies can minimize environmental impacts and risks and create new opportunities to promote sustainable development for our planet's ecosystems. So we've compiled a set of experts from different organizations around the world, and indeed many different languages and from 6 continents to share their views. Our webinar, we will run today for 90 minutes, and we aim to keep everything on time. To open, we have very pleased to have the Acting Director General of the International Union for the Conservation of Nature, IUCN, Dr. Gretel Aguilar. And then we have Huawei's Director of Corporate Sustainable Development Committee. And jointly, they will provide some opening remarks to set the scene for our webinar today. We then have representatives from the Carbon Disclosure Project, CDP, from the International Telecommunications Union, ITU, and Huawei as well, who will share their points of view about information and communications technology, which is ICT in the general parlance, share their views on climate change, ICT for climate change. After that, we'll have a second session, which will invite Nature Seychelles, the Swiss-based Porini Foundation, the Rainforest Connection, and Beijing Normal University to interpret their experiences for us about ICT for nature conservation. So I'll ask, please, all of our speakers today to try and avoid the acronyms. Keep your tech interpretations simple. We want this to be accessible for all. Without further ado, let's get into the speeches. And then at the end, we'll have also a chance for a panel discussion. So firstly, I'd like to warmly invite Dr. Gretel Aguilar of IUCN. Dr. Aguilar is a trained environmental lawyer, has extensive experience in conservation and sustainable development, including working, aside from IUCN, with the United Nations Environment and several Central American governments. So please, Dr. Aguilar, welcome to our webinar. Thank you, James, and good morning. It is a privilege for me to be with all of you today. But let me start by thanking Huawei for bringing us together to discuss this very important planet. Before I begin, I wish everyone safety and health in these challenging times. No doubt COVID-19 pandemic is a global health crisis that is impacting the way we live in many ways. But as we prepare to go back to the new normal, we can rebuild smarter. And we can work together now to ensure and to follow a thoughtfulness sustainable path where technology can provide an opportunity to make a better planet. Today, we celebrate the World Environment Day, World Environment Day 2020, the International Day for Environmental Action, under the slogan, Time for Nature. We need to implement concrete actions that achieve truly sustainable and inclusive development. And it is here where technology can be a big ally. IUCN knows this very well, which is why we made advancing knowledge, learning, innovation, and technology one of the themes at the incoming IUCN World Conservation Congress that will be taking place in Marseille in January 2021. And I hope truly to see you all attending our Congress because we share with you that is going to be taking place in forms of virtualization methods. At Congress, IUCN aims to show how innovative digital technologies can minimize environmental impacts and risk in the real world, and will deeply welcome collaboration with technology leaders like Huawei, whose knowledge can play a key role in tackling global environmental issues. Indeed, global challenges need global responses,
And I am so glad to see so many leaders here today from all over China, from Switzerland, from Seychelles, and from many other countries. Our planet is under pressure. That is something that we know. Our rapid industrial development, including thirst for technology, has depleted our forests and oceans, causing biodiversity and climate crisis. However, technology can be part of the solution and can help solve global challenges if used correctly. I wish to frame today's sessions by speaking about 3 principles technology should adhere to: accessibility, connectivity, and accountability in decision-making. First, let me begin with accessibility. Who can use technology? Who can benefit? How we can ensure people have tools and infrastructure to access technological solutions they need. For example, access to telecommunications, networks, and digital infrastructure like internet, allowing women and remote communities to find information and opportunities to better their lives. IUCN shares Huawei vision of technology for everyone and recognizes its mission of giving people access to networks and development opportunities that should be available to everyone in the world, in particular to women and to communities. For example, IUCN Commission on Education and Communications operates a program called Nature for All, which includes a program on digital access to support wider environmental education worldwide. Second principle is connectivity. Focus on bringing people, ideas, and solutions together from all over the world. Technology can amplify positive impacts if we use it to connect us. For example, let me give you another example. IUCN and Conservancy and Coral Triangle Center support women's environmental networks across countries in the Pacific Ocean, like Melanesia, Indonesia, Solomon Islands, and Australia. This allows women from dozens of communities to share stories, videos, and discuss common issues. They use technology to build their knowledge and support each other across the vast ocean. Third principle is accountability. We rely on all leaders in all sectors to take responsible decisions, and technology ensures leaders keep to promises and deliver best outcomes for people. For example, IUCN manages a standard for protected areas around the world called Green List of Protected and Conserved Areas. To get on the Green List, you must prove that your protected areas, your national parks, have good governance, transparent leadership, and effective management. When implementing this Green List standard, technology innovations are an important ally. For example, software to quickly analyze huge amounts of survey information on how well parks are run allow us to verify some of these practices. Using this technology also means that parks managers in countries like China, Switzerland, Colombia, Kenya, Costa Rica are accountable to those who live in, use, and enjoy the benefits of protected areas bring. Using appropriate technology to achieve natural resources conservation and sustainable development is crucial to achieve good results for the benefit of people and the environment. We urgently need to use technology to inform better decisions with more accountability that will lead to policies for a better planet. IUCN's vision is to achieve a just world that values and conserves nature. We harness the experience, resources, and reach of more than 1,400, including governments, non-government organizations, and indigenous peoples organizations, and the input of more of 16,000 experts in 6 commissions. This diversity and vast experience makes IUCN the perfect ally for achieving the Sustainable Development Goals. Science, success of our actions.
policies, and standards. And technology is a key step to unlocking the potential we have to deliver informed decisions and achieve inclusive sustainability. Today's speakers will give exciting examples of these three technology principles for climate and for nature conservation. Once more, allow me to thank all of you for being here, and let me also thank you for taking the time to deepen our impact and speed up our response to the world's environmental crisis. We must use technology well. It is important for all of us, around the planet, to count with technology as an ally. Technology can help us to achieve many of the commitments that the governments are about to make. This year was going to be the super year. Now we are working hard to have all those events, the Convention on Biological Diversity Conference of the Parties will happen in 2021. The IUCN Congress will happen in 2021. The big Conference of the Parties for Oceans will happen in 2021. We are ready, but we need to have technology with us. We need to use technology, assertive decisions that will help us to conserve the planet. We need technology to support communities, and we need technology to allow women to communicate, to allow society to be even a more connected society. This pandemic shows us that we are all connected, that no matter where we are, like today in this webinar, we are people from all over the world, and we are connected. So let's use technology to achieve conservation of natural resources. Let's use technology to continue be connected for the well-being of this planet. Thank you. Thank you very much, Dr. Aguilar, for such a welcoming and inspiring opening speech. Dr. Aguilar has shared principles that especially accessibility to technology, technology for connectivity, and technology for decision-making and accountability in that decision-making. She also gave some nice impactful examples, including about the role of women in using technology and accessing technology. So let's see how our other speakers reference these principles during the event. So now let's move to our second opening speaker, and let's welcome Mr. Tao Jingwen. Mr. Tao is Huawei Director of the Board and Director of the Corporate Sustainable Development Committee. He will share Huawei's environmental protection strategy, management, and key actions. So please allow me to hand over to Mr. Tao. First of all, thank you very much for the invitation from IUCN. On behalf of Huawei, I am very honored to be here today to share with you the topic of tech for a better planet. Huawei is a leading global provider of ICT infrastructure. Our vision is to bring digital to every person, home, and organization for a fully connected, intelligent world. We always adhere to customer-centric innovation and provide customers with leading green products and solutions. Speaking of Huawei's environmental protection philosophy, we believe that technology is not against nature, but a part of nature. ICT will promote economic prosperity and can also make our environment more beautiful. Tech for a better planet. This is our belief and also is our promise which we have made in the past, now, and future. As a responsible corporate citizen, environmental protection has been incorporated into Huawei's sustainable development strategy. Huawei has developed a sustainability strategy in line with United Nations Sustainability Development Goals. We focus on security, trustworthiness, digital inclusion, environmental protection, as well as healthy and harmonious ecosystem, among which environmental protection
is one of our top 4 sustainable development strategies. In terms of environmental protection, on the one hand, through ICT, Huawei focuses on reducing carbon emissions, accelerating renewable energy, striving towards a circular economy, and ICT-based natural resources conservation. We have been working hard to build innovative and leading green products and solutions to help various industries save energy and reduce emissions. In addition, we keep improving the resource utilization efficiency in production, manufacturing, and logistics, and try to build an environmentally friendly operation system. In addition, we work with our partners to leverage ICT to protect natural resources in a more efficient manner. To facilitate effective strategy execution, we have established a systematic management system. At the group level, Huawei has established a Corporate Sustainable Development Committee. I am the company's Sustainable Development Officer and report directly to the Board of Directors. Huawei has always been committed to energy-saving technology innovation from multiple dimensions, such as architecture, process, and materials, to continuously improve product energy efficiency and reduce carbon emissions. Here, I will cite 3 examples. In terms of wireless domain, Huawei has launched a future-proof full outdoor 5G solution. Huawei is the world's first vendor to reduce an average base station's power consumption from 3,000 watts to less than 500 watts during 2G, 3G, and 4G development. 5G offers features such as high speed, low latency, and big capacity while presenting new challenges of power consumption. With the full outdoor modular design, a pole can be used to mount all wireless devices, power supply devices, and microwave devices outdoors. Compared with the traditional site solution, this solution does not require air conditioners, which can reduce the site's power consumption by at least 40%. In the optical transport field, traditional WDM devices require a large number of optical fibers to connect to each other in the equipment room, which consumes much energy and a large amount of equipment room space. Huawei's unique optical fiber printing technology can print 1,000 optical fibers into an A4 paper-sized optical panel. Now, only one device is required to replace 9 traditional devices, which reduces the overall power consumption by 60%. In terms of data centers, in particular AI-powered computing, in 2019, Huawei launched the industry's first full liquid cooling AI cluster. The cluster not only uses the liquid cooling mode for the cabinet, but also implements liquid cooling at the board level. With the same 256 pflops computing power, a traditional air-cooled cluster requires 86 cabinets, while an Atlas 900 cluster requires only 16 cabinets and reduce power consumption by 60%. Based on ICT, Huawei works with partners to accelerate the large-scale application of renewable energies. By integrating information technology and photovoltaic technology, we have improved the efficiency of photovoltaic power generation and converted each joule of solar energy into more photovoltaic power. Since 2013, we have contributed to more than 180 billion kilowatts-hour of solar power to the world, equivalent to a reduction of more than 108 million tons of carbon emissions and more than 200 million trees.
On the one hand, we continuously introduce renewable energies into our operations and build PV power plants on our campus. On the other hand, we actively promote the wide application of smart PV in the world to bring clean electricity to millions of households. In China, we have built the first PV plant in our southern factory in Dongguan. It generates 18 million kilowatt-hour of electricity each year and contributes 10% of the factory's electricity consumption. In Saudi Arabia, we have worked with partners to build the Sakaka 300 megawatt PV plant, which supplies power to 45,000 households every year and reduces carbon emissions by 430,000 tons. In Argentina, we worked with partners to build a 300 megawatt PV plant in Gauchari, which generates about 660 million kilowatt-hour of electricity per year that provides sufficient clean electricity for 160,000 households. In terms of ICT conserving the natural resources, Rainforest Connection is a non-profit organization dedicated to protecting the rainforest through technologies. In 2019, Huawei cooperated with RFCX. Based on the data analysis capability of Huawei Cloud and our smart devices, the noise detection precision of chainsaws increased to 96%, which greatly improves the work efficiency of forest rangers. The solution has been implemented in 10 countries and regions, where more than 2,500 square kilometers of rainforests are protected. In 2020, we plan to extend the experience to more countries, protecting over 6,000 square kilometers. In terms of ICT helping protect natural resources and biodiversity, we are working and the China Representative Office of World Conservation Union to build an integrated surveillance system for Northeast Tiger and Leopard National Park. With the deployment of ICT products and solutions, the efficiency of data collection, transmission, storage, and analysis has been greatly improved. In the first phase, Huawei and our partners jointly built a 700 MHz trunking solution, which covered more than 5,000 square kilometers. Based on this network, the image of infrared camera can be transmitted in real time, and the forest protectors can make video calls. In addition, the intelligent video image analysis of Huawei Cloud can quickly identify and protect wild species such as tigers and leopards. In 2019, Huawei officially launched Tech for All program, one of which is to protect the environment. Huawei has never stopped making efforts to protect the environment. We sincerely are open and are willing to cooperate with governments, enterprises, and NGOs, as well as other organizations. Welcome to join us in our action plan to build a better environment. Thank you very much. Thank you indeed, Mr. Tao, for sharing this presentation. We can see that environmental protection is one of the key corporate sustainability strategies of Huawei. And Huawei has been investing in research and development to maximize the potential of technology for a better planet. We're going to hear from some of those examples, the Rainforest Connection and the Tiger research, later on in the webinar. We really hope that Huawei can continue to provide this kind of innovative products and solutions and help more organizations, more industries, as well as maintain their own commitment to low impact and low carbon technologies. So thanks again, Mr. Tao. For the webinar, I'd like to move into our first session now.
which is ICT technology for climate change. And ICT and technology has significant potential to promote economic prosperity, bring positive benefits and environmental benefits if we use and develop them appropriately. And we really hope that the ICT integration into more and more industries will help us drastically reduce carbon emissions. So to begin our session, I'd like to welcome Daniel Turner. And Daniel Turner is the Global Head of Corporate Engagement and Reporter Services of the Carbon Disclosure Project, CDP. So Daniel joined CDP way back in 2003 and has been instrumental in establishing CDP's annual disclosure and reporting cycle as standard business practice. So back to Dr. Aguilar's principles of accountability, transparency, and decision-making. With over 15 years sustainability experience, Daniel is responsible for CDP's global engagement strategy with thousands of companies. So over to you, Daniel. Let's hear your views on climate change challenges and expectations for the ICT industry. Right, thank you very much for the introduction, James. It's a pleasure to be here. Hopefully you can hear me okay. I'd like to talk today just a bit about CDP's role in this space and how the data can really enable this transition. I've got a few slides to go through, just a little bit of background on CDP for those not familiar with us, and then really the call to action for the sector, which is around science-based targets and RE100. So just in case you're not aware, CDP is a global environmental not-for-profit working to secure a thriving economy that works for people and planet. Essentially, our tagline is disclosure, insight and action. And really the disclosure piece is all about transparency, putting this data, environmental data, but also data about water stewardship, about the use of forest commodities, out into the markets so that the stakeholders, whether it be investors, customers, suppliers, the public at large, other NGOs, academics, this data is there available for people to use. We want to see analysis on it. We want to see tools coming out of the back of it. And insight piece, the learning that comes from this data being available, standardized format. So it's easy for those stakeholders to make the comparisons and compare benchmark companies against each other. So that learning piece is really critical. You understand what the risks are for your company, what the opportunities are, and what you should really be doing, learning from your peers. That drives what we want to see, hopefully, the action piece. It's all projects. Changing your strategy to be more sustainable, so it's looking towards that future, setting in place governance measures and so on. So we are the world's largest comprehensive collection of self-reported data, and really we want that network of investors, purchasers and policymakers to use this data and insights to make better informed decisions. Just in terms of the growth of CDP over the years, as you said in my introduction, I've been there a long time. So right at the start, it was me who phoned pretty much every company that responded, got them to engage. We had about 250 companies that first year. Last year, we had nearly 8,500 companies responding. And the biggest jump in responses we saw was between 2018 and 2019. So that shows that the level of engagement has just has grown stronger and stronger, asking for this data. And with the addition of the supply chain work, which I'll touch on in a minute, that's bringing this the data collection out to more people, which gives more access via that. It's not quite big data yet, but that's what we want, that as a sort of how people can engage with this data. What happens to the data once it's been reported, once it's been submitted by the companies? Essentially goes in many different directions to many different groups of actors, but primarily it goes to the financial markets. So it's in Bloomberg, it's in MSCI, it's in Sustainalytics, it's in all these platforms, often packaged up with other data, but it's one of the foundation pieces. But it also goes to policy initiatives and civil society. So we're very closely connected with TCFD. We aligned our questionnaire completely to the TCFD recommendations. It goes to the Climate Action 100 project. I work with cities. So the data goes out there into the ecosystem to help drive this decision making.
Mentioned supply chain. That's a really significant piece, especially for the ICT sector. Often a lot of the largest source of the emissions is not in the direct operations. It's out in the supply chain, up and down the value chain. For ICT, it's around 6-to-1, about 6 times the amount of emissions are out in the scope 3 as opposed to direct operations. So that engagement with the supply chain is really, really critical. CDP been working with the ICT sector for a while. The example companies I show are more specifically the telco sector, but we have a number of members we work with on the ICT side as well, more broadly. We're very proud to be working with GSMA, and they joined our supply chain program this year along with these other telcos you can see there, and that's really driving out the request for more information to have as much collected as possible directly from those companies so they can really be aware of what the suppliers are doing and to drive action down the supply chain. That helps them understand the impact, and they really want to see progress from their suppliers towards setting targets. And they want them to use renewable energy, and I'll touch on that in a bit more. In terms of collaboration with GSMA, in May, we ran a series of webinars for telcos and Chinese suppliers, particularly how to set SBTs. And we've got another series of those coming up throughout June, working with GSMA and the JAC for industrial suppliers. So this is really, really key to getting this data out there and collecting more of it in that objective, comparable format. Science-based targets, if you're looking for what a company in the ICT sector should be doing, they should be joining their colleagues who have already committed to science-based targets. So as it stands, these are figures hot off the press. 879 companies globally have committed to set a science-based target. Around 377, so nearly 400, have had those targets approved. Because the SBTi has been going on for a little while, we wanted to see more ambition. And so the most recent campaign is the 1.5 degrees campaign. It is, if you're going to have a science-based target, or if you're going to have a net zero commitment, we really encourage you to join this campaign, put your voice to it, use your weight within the industry, and to work with your peers and your suppliers. This 1.5 degree pathway is really as you see the hashtag there, it's the only future we have. We really want to drive that. We have a number of companies here, telcos, who've made that commitment already. We really want to see more doing that. 210 companies have, and this is going to be the new normal. This is what a proper target should look like. It should be aligned with that 1.5 degree future. One of the main hurdles to that in the last couple of years has been that there wasn't a methodology specifically for ICT sector. And then the ITU, working with GSMA and GESI, 3 really kind of powerful organizations there who have lots of leverage between them across the industry, collaborated to get together some guidance that was specifically for the ICT sector, how they should go about setting a science-based target. It touches on mobile telecoms networks, fixed telecoms networks, data center operators, and equipment manufacturers. So it's really the foundation, the cornerstone piece of what those companies will need to work through in order to be able to understand what's required to set these targets. So we're very proud to be working alongside these organizations to bring this work forwards. So that's the first call to action. It's get in and set that target. The next thing we would say, the key thing that the industry can really drive is the renewable energy 100% commitment. So RE100 is the tag for that. We have currently 235 companies, again a few examples there from the telco sector, that have made that commitment. We appreciate in some places around the world this is quite a tall order. There just isn't the infrastructure from the energy network to actually currently deliver 100% renewable energy. And so that's where the power of the industry to really lobby and demand change in the energy infrastructure
You can generate your own electricity. Sure, that's one way to work towards it, and we definitely encourage that. But I think the collective power of the industry to really demand the way the energy network, the energy system delivers power to everyone is really key, and that's the leverage that big industry has. So I'll finish with just a few bullet points here, just about what the renewable energy expectations would be for the ICT sector. I think firstly, if you're unfamiliar with RE100, please go and check out their website, find out more about it, what's involved. But we want to prioritize that local supply on the same grid as the company's demand. Use impactful procurement methods, public power purchase agreements, or self-generation. There's plenty of examples. And as I mentioned, it's really about advocating for change with the utilities, with elected local officials, with regulators, so that it is possible for industry to have 100% renewable energy. Collaborate with your peers as well. It's not about looking out for number one. We're all in this together. I think as the connection piece that was mentioned earlier, everyone's in this together. So I think this is really should be a driver for how that can manifest itself. It's really pushing for that renewable energy to be the primary driver. I think that's pretty much it for me. Very happy to have had the opportunity to push this work forward. But yeah, we'll just leave you with those two things. It's three things maybe. Disclose to CDP if you're not already. Get your data into that ecosystem. Be transparent. Consider joining that 1.5 degree science-based target campaign, and then look into the renewable energy going as high a percentage as you can. Ideally 100%, but if not 100, then as high as you can. Thank you very much for the opportunity to talk to everyone today. Thank you very much, Daniel. Thank you so much. That was really right on the message. And I'll just reiterate a couple of points. RE100 website, visit it, no? Disclosure, transparency, getting information into the public domain and then using it, and the call for science-based targets. And I think this leads us very well to our next presentation from Dr. Bilal Jamousi. Dr. Bilal Jamousi is with the International Telecommunications Union, and he's the chief of the Study Groups Department and works with the Standardization Bureau. Dr. Jamousi has led the coordination of the Bureau's standards-making activities into this new era, characterized by a need for increased collaboration amongst the sectors. So please, Dr. Jamousi, let us hear your views on the role of ICT for climate change action. Over to you. Thank you very much, James, and greetings to all the participants, and thanks to Huawei, one of our sector members in the ITU, for organizing this webinar today. The ITU is a unique platform for bringing governments, private sector, and academia to, among other things, develop international standards. And it's a pleasure today to share with you some of the work that is going on in the ITU in terms of the climate action with ICT. Let me first start by indicating that today the ICT sector accounts for about 2% of the global emission. It can, at the same time, help reduce the emission of other sectors to an estimated 15%, according to a Nature publication. But if we look forward to 2030, the ICT sector could increase consumption of energy in the best case to 8% and worst case to 20%. So with those predictions, we have a study group in ITU called Study Group 5, looking at how we can reduce the emission of the ICT sector, and at the same time, how ICT could be used to reduce the emission of the other sectors. So in this presentation, I will walk you through some of the work that is being done by ITU in this journey. First of all, in terms of the frontier technologies and how these can address global challenges such as climate change. We have a number of frontier technologies such as the artificial intelligence, machine learning, and AI. And there are examples where AI and machine learning could be used to
predict how to best optimize data centers, for example. Data centers are known to be one of the large consumers of electricity. AI could also be applied in other sectors, for example, in transportation. How do we optimize the road traffic by using techniques in engine idling of automotive industry, in better traffic flow, things like that. Another frontier technology is the Internet of Things. And with the Internet of Things, we can essentially twin the physical infrastructure. We can have a digital image of the physical infrastructure. And through these sensors and actuators and Internet of Things, we can have a much better collection of data and a much better control of the physical infrastructure. And with that, we can achieve a larger reduction in electricity, for example, in better managing buildings and having smart buildings and infrastructure. A third example is the use of the fish robots in detecting and monitoring the ocean pollution level and status of the ocean. Finally, many of you heard that this year is the year of IMT 2020, which is the 5G network. And the 5G network is bringing three new things, new dimensions to the industry. Of course, more broadband, but also massive connectivity. So these Internet of Things that I was talking about are much easier connected through the 5G network because it was designed with that in mind. And it also provides for a very low latency, which allows us to have remote control of many devices. It could be telemedicine, it could be autonomous driving, it could be many new technologies enabled by 5G that are not possible without it. And those new technologies are a way to save energy consumption in other sectors. Now, focusing on the ICT sector itself, ITU is working on helping the ICT sector itself move towards a carbon neutral path. I mentioned our study group 5 on environment, climate change, and circular economy. This is a very active group developing international standards with governments, private sector, and academia. We also have a focus group, which is open to non-members of the ITU, and is looking at the research and pre-standard work for the use of artificial intelligence for energy efficiency. We're working on raising awareness on international events and reports, such as today's event. And a topic that was mentioned a couple of times before me is the importance of collaboration. And ITU works in a very collaborative manner, not only with UN organizations, but other organizations that were presented today. Let's look at standards helping the green transition. Data centers are known to be quite heavy consumers of electricity and energy. And so one of the focused activity in study group 5 is on the data center infrastructure management system based on big data and AI. So here, how can we use the data that is coming from the data center itself to be able to predict automatically and better manage the infrastructure of the data center? And how do we decrease the overall system cost and increase its efficiency? And this is the topic of one of our standards that was recently published. Other standards that are available and publicly available and free to download on our website is a number of smart management systems for the telecom sites. So this is a recommendation specific on how to make smart management of telecom sites, a smart management of the data center, and a smart management of the telecommunication rooms themselves. And the combination of these smart management standards allow us to achieve a green transition, decrease the carbon emission, increase the energy efficiency, and extend the product life while reducing the cost of the solution. In addition, we're looking at helping the ICT sector reduce its greenhouse gas emission. And in order to achieve that, we have to have a common methodology of assessing the environmental impact of ICT. So we have those methodologies that are published standards.
that provide the methodology for calculating the ICT sector footprint with respect to the life cycle greenhouse gas emissions, and the methodology for defining greenhouse gas emission budgets for the ICT, considering this 2 degrees lower trajectory. Then we have the GHG emission trajectory for the ICT sector compatible with the UNFCCC Paris Agreement. And here we have a recommendation standard, an international standard called the L1450 on the greenhouse gas emission trajectory for the ICT sector compatible with the UNFCCC Paris Agreement. And this provides us with a detailed trajectory of the GHG emissions for global ICT sector and subsectors that are quantified for years 2015 and the estimates for 2020, 2025, and 2030. And then the next step is to have the guidance to operators and mobile and fixed networks, as well as data centers for setting that 1.5 aligned targets. And again, here the recommendation or international standard L1470 is used to support the operators and data center owners in setting science-based targets for greenhouse gas emission according to the decarbonization pathways described in detail in this recommendation. Next, we look at the ongoing standards work. This is not yet published, but it is under discussion by the Study Group 5 with governments, private sector, and academia in 3 dimensions. One is the energy efficiency and smart energy. We're looking at the energy efficiency metrics and measurement methodology for data storage, servers, and 5G base stations. The energy saving technologies and best practice for the 5G radio access network equipment, and the energy efficiency and slicing of the 5G network, essentially being able to use the 5G network in multiple services, multiple virtual networks, if you will. The next dimension is the circular economy, including e-waste. So we're looking at the environmental impact of architecture solutions with regards to end of life and circular economy. And the third dimension is the climate change. We have a report on the decarbonization strategies and GHG emission reductions enabled by actual implementation of ICT projects. In addition to the study group work, I mentioned the focus group, which is an open platform looking at the environmental efficiency of AI and other emerging technologies, called Focus Group on AI for EE. And it is the first really global platform dedicated to studying the requirements, the assessment and measurement, and the implementation of AI and other emerging technologies to ensure environmental efficiency. So we have a call for everyone to join this open platform to really further develop AI and other emerging technologies for energy efficiency. Finally, I would like to reiterate the availability of this report called the Frontier Technologies to Protect the Environment and Tackle Climate Change. This is developed in collaboration with about 10 other UN agencies. It is publicly available on our website. It is free to download. And it is looking at frontier technologies as key enablers for cities to become smarter, more sustainable, and environmentally resilient. And keep in mind, the environmental aspect of frontier technologies are often overlooked. So we really would like to use this opportunity to make a call for everyone to consider this report and use a frontier technology in this space. With that, I'd like to thank you very much and invite you to be part of this journey, use the reports and standards that are available, and participate in the elaboration and development of future international standards. Thank you very much. Over to you. Thank you very much, Dr. Jamousi. That was a really interesting presentation. And in summary, I'd like to just reiterate that the Frontier Technologies for the Environment report is available. It sums up the work of many UN agencies. It's something that, as IUCN, would also support and encourage you to download, to read, and to think about how you can apply this.
the principles and the standards that we've heard from Dr. Aguilar and Dr. Jamousi, also illustrated by Daniel, are very well illustrated here. And we really need to use what is already there. The ITU have standards. We have a lot of information already available about how to use the technology that exists as a tool for better planetary sustainable development. So we need to use it well, use it right, and bring the benefits to everybody. And in this line, I'd like to now move to our next speaker. I'd like to invite Monsieur Michel Fraise. For the last part of this session, Michel is the Chief Technical Officer of Huawei Digital Power product line, and he has over 30 years of experience dealing with the IT and the telecom power industry. So Michel, the floor is yours to share your thoughts on how key technologies can help reduce carbon emissions for different industries. Thanks, Michel. Thank you, James. Good morning, good afternoon, good evening to this worldwide attendees to this webinar. We represent today this digital power business unit from Huawei, where our target is to offer green power to telecom networks, data centers, solar farms, etc. The first thing I would like to do is the energy infrastructure can provide green power to the digital world. Today, with the help of sensors and IoTs, everything can be sensed. Every equipment can be sensed. All these sensors and IoTs, they're connected. We can gather data, and all this data can be analyzed, processed, and with the help of artificial intelligence, they can make things more efficient and greener. So if we look at the Huawei digital power product line, we are committed to clean power supply and efficient power use. The first segment we are working on is smart PV. It's grid-connected inverters in order to convert the solar energy into electricity. The second one is our data center facilities, where we provide infrastructure to power the data centers in a clean and efficient way. Site power facilities is regarding all telecom networks, being, with 5G coming, we also got a lot of challenge, and I've been working closely with the ITU to try to find ways to reduce the impact on the planet. And power, which is motive power, this is making efficient electronics, power conversion devices, and battery management system for electrical vehicles. And modular power is all the power supplies that we can use in our own equipments, being servers, being the switches, being the active antennas for 5G. So to power a green digital world, we need to focus on the module high efficiency, from chips, components, to modules and products. We need to, take these modules to build systems which are very efficient as well. So we use digital management and intelligent operation and maintenance tools. And now we have all the synergies between the networks to have device edge cloud synergies, improving end-to-end resource utilizations and optimizing the energy efficiency. When we say bits manage watt, I mean, in an ideal world, if you have no traffic on the telecom or data centers, then you should have no power consumption. So basically, if you have 0 bits, you should have 0 watt. This is, what we are working on, trying to, make it in as close as possible. If you look at our smart business, we're striving to make the highest efficiency, power conversions inverters. And today we have a maximum efficiency of 99%, so getting close to 100%, which allow us to have 2% higher yields. 2%, it's a lot. So it's 2% more electricity, which being power from the solar panels. We also use artificial intelligence to have very efficient PV tracker controls. The idea is also to have a full view of what's going on also on the PV plants. So by having all these IoTs and being all connected, we can reduce operation and maintenance cost by 50%, being more efficient, spending less time on sites, and also by improving the inspections of the plant. The idea is, and we start to see that it should not cost more than the thermal power. I mean, in the future, it probably will cost less.
If we look at the telecom power, the site power, we're focusing on very high efficiency rectifiers, 98% efficiency. We're focusing on improving our cooling systems by promoting natural coolings. We focus on system high efficiency. The idea is to go from indoor to outdoor and eventually what we call blade sites. So you can see that the site energy efficiency, which is also defined by the ITU, by 1 ITU standards, can go from around 60% with indoor sites, where the cooling is a big part of the consumptions, to roughly above 95% with blade power, which is a convection cool units. So this is why we are working at. We are targeting to have more and more solar being used on the sites when it makes sense. And we're also trying to remove the gen sets when it's possible, or at least to make them work at the highest efficiency points, using, again, high efficiency rectifiers, high efficiency lithium batteries, and smart control with the help of AI. And all this, system together with high efficiency components, then we can have a very high efficiently managed networks, which make that we're trying to reach our targets of 0 bit at 0 watt, or 0 watt at 0 bit. Data centers is also growing very fast. Many data centers are being built, the big ones, cloud data centers, some small ones, more and more edge computing data centers to be built as well with the coming of 5G. So we need to work also on efficient devices, efficient components. We're working on a very high efficiency modular UPS with efficiency above 97%. We're trying to reduce the footprint, to reduce the size also of the building we're going to build. We work on high efficiency cooling, trying to promote fan free cooling or wet film humidifier. Then from these components, we assemble all these components in a smart modular data centers where we have high efficiency precision air cooling systems. We're trying to integrate the complete power chain in one modules, including the transformers, the switchgears, the UPS, and distributions. And then what we call indirect evaporative cooling. This is a new modules that we can use to cool down your data center rooms. Use free cooling and indirect evaporative cooling. So it's basically water where you can put some fresh air, some air on it, some fans on it, which can refresh the rooms before you go to air conditioning if needed. And this is at the last time. So we're focusing on lowering the PUE of the data centers. Again, the AI and high cooling is the name we give to our AI-based algorithms to optimize the cooling systems, to reduce the power consumption. So we can reduce the power consumption of the cooling system by 8 to 15% by your experience. If we want to conclude with the help of ICT technologies, power technologies, since 2013, we have been basically allowing to save power generations about 270 billion kilowatt hour, which is an equivalent of 170 million tons of CO2 emissions. And this is the equivalent to 220 million trees. So we do believe that, we can, even if we increase the number of ICT equipment being connected, we can, control the power consumptions. We can make this power consumption greener with the help of the other one. Thank you very much. Thank you very much, Michel. That was really, really interesting, and it was a fantastic introduction to Huawei's technology innovation in different energy infrastructure applications, and especially your point on increasing solar power, the efficiency of solar power, but also the efficiency of other types of energy, telecom power, data center power, electrical vehicles. It's hugely important, and these innovations are, continue to be vital to how we can shift technology towards, meeting these principles, meeting the standards that we presented already. So thanks again for your presentation, and that wraps up just our first discussion on climate change.
And we're going to move to the second part of our webinar now, which is technology for nature conservation. And there's increasing evidence that ICT solutions, such as mobile networks, smart terminals, cloud computing, artificial intelligence, can significantly improve the efficiency and effectiveness of natural resource management activities, particularly around the points that Daniel made, that Dr. Aguilar made, around the access to information to help make better decisions. And in this session, we invite our experts, practitioners, and scientists to share some of their perspectives and views on these principles and demonstrate some real kind of field level application of tech. So I'd like to firstly introduce Dr. Nirmal Jivan Shah from the Seychelles, from the Western Indian Ocean. So Nirmal is the CEO of Nature Seychelles. It's one of the leading environmental NGOs, certainly in Seychelles, but also in Africa and in the world. Nirmal himself has won several awards in environmental education, environmental conservation, and awareness raising. He's led some of the most inspiring conservation success stories, including rescuing critically endangered species of birds, saving turtles, restoring coral reefs. He's a senior member of IUCN's World Commission on Protected Areas, and his topic today is next-gen conservation. So welcome, Nirmal, and over to you. Thank you, James, and thank you, everyone, for joining us. Thank you, Huawei, for helping to organize this. First, let me apologize that I was expecting to be streamed live, and just proves that we still have a bit of a digital divide between people and countries. I'm beaming from you. I'm beaming to you from the Seychelles, which is the only high-income country in Africa, but we still have low bandwidth. So I've been told that my my video presence is not good enough. So I'll be talking to this slide. So excuse me for that. Now, we know that this COVID-19 crisis is hollowing out biodiversity conservation as we know it. The traditional sources of funding are drying out. Financial concerns include the collapse of tourism, which many conservation organizations depend on heavily, especially in Africa and in small island states. We also have sharp and rapid decline in the value of trust funds and investments, uncertainty about the continuity of donor funding, and default by governments, again, many of whom are in Africa and which are already heavily indebted. We will not have money to keep staff or to buy equipment and materials. Volunteers, consultants, and international researchers will have difficulty in moving around because of new rules and concerns. And we are caught in the blowback of all of this. We must jettison baggage and move on. But where do we go and how do we do it? We must look for new kinds of support, learn new ways of doing things, and do more with less. The global megatrend is disruptive of frontier technologies, as we've heard the previous speakers say and describe. And this is probably the future of conservation as well. The Internet of Things, AI and machine learning, blockchain, cryptocurrencies, and so forth should play key roles, I believe, in conservation. Traditional conservation of biodiversity will need to leapfrog into what I am calling e-conservation, a brave new world, but whose foundations are already built, again, as we've heard previously. Now, e-conservation must be the future. For example, working from home, as we've seen, is facilitated by apps like Zoom, like we're using today. But this is just the beginning. There will be more interactive virtual programs that will make remote attendance at meetings more acceptable and productive. This will hasten the demise of many physical international conferences as well as national meetings. We will save on office rental, transport, time, and budget, and shrink our carbon footprint. Traditional money is becoming scarce right now in our region in any case.
And I believe that cryptocurrency may find enormous traction. China is already shaping up to be the first major economy to launch digital money. Facebook and others are also working on their own digital coins. Another generic instrument is blockchain. And we must look at it seriously because it can be used for many purposes in conservation. It will be a keystone in any new conservation architecture. One example where blockchain is being used here in the Seychelles and in countries which are highly dependent on fish, and tuna in particular, is tracing fish from bait to plate. And tourism. As tourism to our protected areas and sites disappear, can we turn to live video streaming and ask people to pay for that? Some are already streaming live unscripted safaris with an expert game ranger who's the host in a vehicle, on foot, and using drones, balloons, rovers, and remote cams. This is happening in South Africa, for example. At some point, can we envisage our avatars strolling with a game ranger through a live stream in a national park, or zooming up the beach in a high-speed speedboat like the ones we use on Cousin Island's special reserve in the Seychelles? The challenge is to monetize these experiences. Inevitably, tech will reduce the workload and expenses, as has happened in commerce and industry. And so much is going on already. Tracking devices and other equipment can be made cheaply using 3D printing. Drones, including underwater ones, can survey our sites, and visual and acoustic monitors can inform us of illegal activity. Satellites are already apprising us of illegal fishing in our exclusive economic zones, particularly important for small island states which depend heavily on the blue economy. A portable lab, which I've just become aware of, called Gene, is able to extract, amplify, and sequence DNA even in the most remote field conditions. And there are so many other examples. So as we move into this new world, we need partnerships. We need better partnerships. We need partnerships for a better planet. A commonality which I've seen among many of the tools is that they were originally developed for other purposes. Conservationists must now move from being tech consumers to tech drivers and innovators. New tools must be developed for the new needs of conservation. And we need donors to quickly make the initial investments to catalyze the transition into e-conservation. We need global conservation organizations such as IUCN to seize this once-in-a-lifetime moment and bring donor, tech, and conservation communities together so the appropriate setup and tools are developed. And again, we welcome this particular conference and we thank IUCN and Huawei for facilitating it. We need institutions and people working in conservation to be capacity built, to be able to utilize new tech and to help develop e-conservation. If such actions don't occur fast enough, we will not be able to ensure that nature's infrastructure continues to deliver lasting and healthy solutions for people and the planet. Thank you very much. That's all from me. Back to you, James. Thank you. Thank you very much, Nirmal, for that presentation. It's an impressive forward-thinking concept that you bring. Traditional conservation really needs to leapfrog into e-conservation. And these digital technologies, should play the key roles in the next generation of how we deliver nature conservation. So in the interest of time, thanks again, Nirmal. I'd like to jump now to Roman Eiholzer, the CEO of the Perini Foundation. And Perini is a non-profit Swiss-based NGO fostering innovation technology that protects nature, environment, and people. Roman has a lot of field experience
He was formerly responsible for nature conservation and wildlife management in the canton of Fribourg in Switzerland, governing an area of more than 1,600 square kilometers. He's also worked with IUCN previously. So Roman, please take it away, keep it short, and hit us with your points. Thank you very much, James. Can you see the screen? Did that work? Yes, here it comes. Okay, hello everybody. Hi, James. Thank you for the invitation. I was visiting, actually that's wrong, well, there it comes, visiting the Huanga National Park, and this beautiful scenery you see, you can almost smell the coffee. But my son, he was looking at his iPhone. For him, it was normal to connect to his friends with his mobile iPhone, and which is the primary communication device because of their versatility and portability. However, poor network coverage in most parks restricts the use of mobile phones and then go away. And to promise to leave nobody behind will help us changing that in rural areas. Behind the scenery of the park, sensors are necessary to increase management effectiveness or simply to manage the park. With LTE coverage, we can have uninterrupted connection between vehicles and connect bandwidth heavy applications such as auto camera traps, automated surveillance, and even long-range drone operations and other cloud-based apps like gate operations, vehicle tracking in and out of the park areas, or apps used for research. With the Internet of Things, a new generation of smart sensors inside the park must be connected and can be used for simple tasks like energy management, natural resource protection, pollution control, disaster prevention, and many more. But how can we connect thousands of smart sensors in a park? Either we use LTE or we can use other emerging technologies like IoT and LoRaWAN. LoRaWAN stands for long range and has become the preferred technology for IoT networks. LoRaWAN is a low-power wireless network that spans over many square kilometers and uses battery-powered devices that can last for years. Smart sensors can send small data packages over LoRaWAN, like status updates and reports, or upon walking from an external trigger to give an alert, for example, after an intrusion. LoRaWAN will greatly increase connectivity in the park and allow to follow the developments in the park in real time. Let's take an example. A new LoRaWAN animal tracker, compared to traditional ones, would have reduced size and weight and does not need a large battery which can interfere with the animal movement. And because of its low consumption, the tracker might be functional for many years or even the entire lifespan of an animal, as there is no need to change the battery anymore and the sensors are cheap. But what happens if the tracked animal is out of reach? Until now, we just must wait until it gets closer again. But new technologies and increased connectivity in rural satellites can take over and also support data encryptions, for instance, to hide the position of the tracked animals to protect the animal against poachers. Today, internet access is delivered through few satellites and in high orbit, but the next generation of satellites is already launched. Companies like SpaceX, Kuiper, Amazon's, or OneWeb, among others, started to launch hundreds of satellites into orbit to cover 95% of Earth's population and the potential to serve the so far unserved or underdeveloped rural areas over time. But there is a catch, as you need many, many more satellites to actually cover the whole area. Nevertheless, these new low-orbit satellites are launched for IoT to allow global connectivity for the so-called machine net in the future. This new connectivity will allow new technologies like blockchain to be introduced in parks. Blockchain technology allows peer-to-peer values transfer at minimal costs and to trace these transactions on a global ledger. A park can offer superb and sustainable products and proof of origin on blockchain, where you validate the location of product and get additional information on production standards, transport routes, and the people behind the product is a new feature delivered through blockchain technology and will allow a buyer to follow the product from the park all the way to his home. And people can verify the promises made with the purchase. Creating peer-to-peer business opportunities will increase the willingness to buy directly from the park, thus creating new revenue streams for parks and additional finances for conservation work. It also allows to track illegal poaching activities and using micropayments on blockchain. Can finance decentralized energy and water production and sell the products to the community at a low price. Trading excess energy and water will incentivize a responsible management strategy and lead to better usage of available resources. The world agreed to keep global warming below 2 degrees, and carbon markets are one of the tools to accomplish these goals, as heard earlier. A blockchain-powered platform for carbon offsetting can be implemented for carbon trade. China has been testing blockchain-based CO2 market platforms, and in 2020 is launching the first national market for CO2 trades based on blockchain. With 22,000 emitters, this CO2 market will be the biggest in the world. Protected areas can increase their management effectiveness through the IUCN Green List standard,
and this traceable CO2 sink can be sold in the global CO2 market, valorizing the work from park management and increasing revenues for the park. Using blockchain technology, we can all directly contribute for a better planet. That was it, a little bit too fast, but anyway, it was my pleasure. Back to you. Many thanks, Roman. It wasn't too fast. That was absolutely on time and a very, very key message. I really like the real-time examples and the way you brought that back also to your experiences in the park and, you know, how they stay connected and, you know, some of the challenges in maintaining this connectivity. I think one of the key points that you made, I'd like to just quickly reflect on, is, you know, how we can use these technologies to really increase the effectiveness and provide better support. I think that, you know, this connection between nature conservation, ICT, financing is really something that if we want to scale up our efforts, we need to rethink, as Nirmal said as well. And I think this brings us really nicely to our next presenter, Mr. Topher White from Rainforest Connection, because Topher's presentation is about the innovative Forest Guardians, which is a collaboration between the Rainforest Connection and Huawei's Tech for All program. Rainforest Connection is a US-based non-profit tech startup at the cutting edge of conservation technology. And Mr. Topher White, the founder and CEO, based in the Americas, is up very early now to show us how ICT solutions enable protection of forests and animals from illegal logging and poaching. And this is the type of technology that we need to really focus on and try and scale up for a better planet. So over to you, Topher. Thank you very much. I'm really happy to be here and to be able to talk about this. I'm just going to dive right into it. These are some amazing talks to follow. But let's talk about illegal logging, first of all. So first of all, we can sort of look at illegal logging and say that up to 90%, between 50 and 90%, according to Interpol, of logging globally is illegal. And that's actually a terrible statistic, but it's also an opportunity for us to do something about it. Because if it's illegal, there's actually a mandate to stop it using people who are already there. And so if you look at illegal logging, it's not actually always the only activity that leads to the wholesale destruction of the forest, but it is one of these activities that's so profitable in most of these places that they will cut a road through the forest to extract the most valuable woods. And once that road is there, then what you see is the legal logging will end, but there'll be other activities that come in and lead to the wholesale destruction of it. And again, if that is up to 90% of the logging taking place is illegal, you can really take a big chunk out of the wholesale destruction of the forest. So how do we actually get to stopping illegal logging? This is a big and complex subject, but here's one particular solution that we take pretty seriously. It's using IoT and technology. The very moment that a chainsaw goes off in the forest, the sound is picked up by a device like this in the trees, who sends an alert to local rangers who can jump on their motorcycles and get out there and actually stop the logging on the spot. This, again, is a very high realistic rendition of exactly how it happens in the forest. But this, of course, relies upon a device, as we've been heard in these last couple of talks, devices up in trees. This is what we call a Rainforest Guardian. This is one as it actually sits up on a tree. You can see it uses solar panels, which allows it to continually recharge itself and therefore able to transmit data in real time up to the cloud all the times over the increasingly very good cell phone networks that are put up by Huawei and their partners in the field. So we aren't required to use additional sort of proprietary open networks. We're able to use ones that are sort of already there out in the outskirts of the forest. And here's an idea. Basically, the sounds of chainsaws, these are running 24/7, the Guardians are. And so the detection of chainsaws automatically is a very important part. So this becomes the intersection of IoT, cell phone service, and the connectivity that's there, as well as the using AI to detect chainsaws, which we'll get to. And of course, you're not going to put these everywhere in the forest. You're going to put them in the outskirts, the places where you're most likely to have not only logging, but also cell phone networks. And so that's how we put them up. We put them on the outskirts or the periphery of a forest. And based on this, you have one of these devices, one of these guardians, as we call them, which is able to then hear sounds. One of the powerful things about sound is that you can hear it kilometers away, which means just, one of these devices up in the right place can hear sounds of chainsaws 3 kilometers away. And speaking to the idea of climate change, that's up to 15,000 tons of CO2 is contained in that amount of forest.
So in fact, just protecting those 3 kilometers with the right partners and the right technology can lead to the equivalent of 3,000 cars off the road. It's really a very outsized way to have some impact. And that's really what we're trying to do. How can we build a partnership with local telecoms, local people on the ground, and technology around the world to enable that sort of outsized impact? So we've been doing this for a while, but it turns out that, you know, a small startup like us can only be good at a certain number of things. We had built these devices and we're using cell phone networks. And so we teamed up with Huawei beginning in 2019 to begin to both improve the way that we could look at our own data and pull something out of it. And using Huawei's model arts, we're able to do just that. So here's an example. Hopefully you guys can hear the chainsaws. Yeah. This is a chainsaw at a couple hundred meters away. Yep. Certainly not that hard to detect or to actually find within the sounds of the forest. So this is the AI that we could sort of take on. But, you know, teaming up with Huawei, we were able to get much better at this. So what if you want to hear a chainsaw that's, you know, kilometers away? And that's where you end up having a detection like this. And so the real question is how good can you actually, hear this chainsaw? Were this actually to play, you wouldn't be able to hear it at all. You can see the difference in the, here we are. We're going to head back for a second. 1 second here. I'm going to head back here. Oh, no. Okay. Trying back again. Thanks for your patience, you guys. All right. Skipping through here to the next ones. Thanks for your patience on getting these slides up. You've seen these slides before. But again, the idea is that we can, in fact, hear the chainsaw detections at a much greater distance away. And this is, again, what you heard a minute ago. And with the detections, we're able to, in fact, hear very, very quiet ones. So I'm not sure if you're able to hear this chainsaw. It's very faint. But this, again, is at about 1.5 kilometers away. Really an amazing distance to be picking up the sound. And this, what this looks like in the field after this happens is that we're sending alerts to local partners. In this case, it's the indigenous tribe in Brazil, and you have having a situation like this. Where even though it was too late to actually stop that truck from being full of wood, at the end of that path was an entire group of indigenous warriors who were protecting this land in a place where there is no law enforcement. They were able to seize the truck, seize the assets, arrest the people. And that just goes to show how one of these people in the forest, one of these local communities with the right technology, the right infrastructure, and the right partners can have a very, very outsized impact. This guy can have, the effect upon the equivalent of taking tens of thousands of cars off the road just from protecting their own backyard. So we've taken this project all over the world with the help of Huawei and others. Just 14 countries already in 5 continents, 3,300 square kilometers of forest protected, which again has an outsized impact, but that's still just very small. And it's not just about catching loggers. We also realize that every single one of these guardians, these devices, can be streaming audio up into the cloud. You can actually hear. Anyone can tune in and grab these apps from the Play Store or App Store and actually listen live to the sounds of the forest because we're streaming this to the cloud. And we highly encourage people to do that. But this additionally opens up a whole new frontier that Huawei is helping us to tap into, which is that these sounds are not just there for detecting threats. What if you had a situation like this, where through these live streams, you can begin to pick out a very precise, different correlation of species to each other. This is the science of bioacoustics. And in doing so, what we actually see is that you cannot just, this is one thing to do this over a minute, 2 minutes. This is something that can be done. But doing it over, not just minutes, but hours, months, years of audio allows you to take this very precise understanding of what's happening there and stretch it out to the point of view that can be to a scale of time that can be actually affected by climate change and see the effects on these ecosystems over time. We're really excited about this. We hope it can turn ecology and biology into almost a big data challenge
that only a company like Huawei and their partners can take on. And in fact, that's something that they've been very interested in helping us do. We worked with them already in Costa Rica to be able to improve a detection for spider monkeys, similar to what you just saw, already up to really up into the high 80s and 90s. Can we detect spider monkeys very effectively? And that's a video that you saw earlier on. So again, also with their help, they've not just been helping us on the tech side, they're very committed to getting their local sort of domestic offices of Huawei to help us expand into these countries. There's 5 new regions that we're expanding into entirely thanks to them. Philippines, in Africa, South America, Europe, these are all places where we need to expand. And based upon that, we expect our impact over the next year, even with the delays and the serious issues in conservation that we're seeing with COVID-19, we hope to triple our impact in the next year and a half or so. And again, it's not just about the amount of forest, the area we can protect. It's about the species that are within it. It's about the carbon that can be retained within it. And it's also about what you just saw, to be able to record the audio, put it into a live database online, and then almost have this living audio arc of what's happening in these wild places to be studied by scientists and data scientists all together. And in order to facilitate that, we're building what we call the Acoustic Explorer platform. This that you're hearing now is a platform enabled through Huawei's Model Arts to be able to enable the detection of whales. These are actually orca whales coming out of the ocean. And so even though what you're seeing here, what you saw earlier was largely about putting devices up in trees, this platform that's enabled, it pulls in the audio, organizes it, feeds it into Model Arts for the training of species detection, and then brings it back into an interface like this. What you're really able to do is build a hub for conservationists, ecologists, data scientists, and really just enthusiasts, people who love nature, to engage with and help protect nature on the whole. And that's really what we're trying to do in collaboration with this great partnership. Thanks, Scott. Thanks a lot. Thanks very much, Topher. That was fascinating. And the applications that you've just touched upon, from up in the canopy to down under the ocean, and, all sorts of opportunities arise from this type of innovation. So thank you very, very much. And we at IUCN, we're a global union. We have 1,400 members. We're working, with some of the 250,000 protected and conserved areas worldwide. And that's the type of scale where we, if we can see ICT and technology helping bring this type of solution at that type of scale, with the, also the ability to analyze better and to, have big data as well to help make decisions, then that would be fantastic. And so thanks again very much. And we hope to stay in touch with you, and see how we can use some of your innovations in, with our members' work. Much related to this, I'd like to now introduce Professor Fang Limin from the National Forestry and Grassland Administration, Amur Tiger and Amur Leopard Monitoring and Research Center. Professor Fang is from Beijing Normal University. He's a young Chinese biologist. Like most young people, he's connected all the time. But unlike other young people, Professor Fang is usually connected with tigers. And today he's here to share some exciting practices taking place in China, and related to the creation of the new tiger and leopard observation network. So over to you, Professor Fang. Thank you, James. Today, I'd like to tell a story about the Protect China Big Cat. This is a case study in Northeast Tiger and Leopard National Park. Now, we are the Anthropocene. We face the many challenges in our planet. For example, one of the biggest challenges is the diversity loss. For example, as a result of the recent study, more than 77% of the large carnivore population in the world continue to decline, and the trophic is downgrading globally to affect ecosystem function seriously. And in response to this challenge, China is initiating the eco-civilization and beautiful China. We are developing the national park system in next decade.
National park will protect millions square kilometer natural landscape and endangered species habitat, including tiger, the king of the forest. We know that tiger is the pride of the Asia. It is the important cultural symbol in China. Every Chinese knows the story of the red painting, Wu Song, an ancient warrior fight with a tiger. In fact, unfortunately, the big cat tiger have lost their 95% habitat and population in last century. They have become endangered species. The recent IUCN assessment, total of the world tiger population less than 5,000. And the other big cat, leopard also face the same situation. China plan to recover the world population of the two big cats. And in northeast China, it is a temporary mixed forest. And this landscape is a real land of big cat. A century ago, northeast China is the home of armored tiger, the biggest cat in the planet. Today, about 500 armored tigers still survived in this landscape. And at least then 100 armored leopard, the rarest big cat in the world, living with armored tiger. In 2015, under the guide and supported by the National Forest and Grassland Administration and the Jilin Province government, our team, Beijing Normal University team, submitted as a proposal to recovering tiger and leopard in China to the central government. In 2017, Chinese government start to set up the Northeast Tiger and Leopard National Park. Total area of this national park reach about 15,000 square kilometers, 70% larger than Yellowstone. We will recover a viable tiger leopard population in the national park and then let them return their most historical range step by step. Can the new park save Chinese big cat? For answer this question, for guiding the return of the king of forest, we have developed an innovative system to support the monitoring and management of the national park. My ground is this system. From this system, now I'm sitting in the headquarters of resource center, and I can monitor what happened in the forest with real time. This system has combined various technology of ICT, such as integrated 4G or 5G technology, internet, automatic monitoring, and real-time transmission device and sensor. Combined satellite, drone, AI, cloud computing, and big data analysis to support the monitoring and management of this national park. Now, in this national park, the integrated cable and wireless network covered the whole region. We use Huawei signal tower, and this signal can large-scale coverage and high-speed transmission and high
security with the local source. And we develop innovative real-time transmission device to natural resource, include biodiversity, wildlife, water. दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल CM झा अकेडमी पर। आज हम शुरू करते हैं दोस्तों सर्ड्स घातांक। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे लगा, आप लोगों को चर्चा करना चाहिए आप लोगों के साथ बात। तो सबसे पहली बात है कि ये सर्ड्स है क्या, किसे बोलते हैं सर्ड्स। तो सिंपल सी बात है, हम लोग टॉपिक बनाते हैं बट उसके जड़ पे नहीं जाते हैं। मैं तो फ्री YouTube क्लासेस, आप जितने भी YouTube क्लासेस में गए होंगे, सब जगह कहीं ना कहीं थोड़ी सी बातें बताकर बोला जाता है कि ये सब्सक्रिप्शन लो, ये पैसे लो, ऐसे लो वैसे लो। परंतु हमारा ध्येय कुछ और है, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ और वेतन भी अच्छी खासी है, तो कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। तो परंतु एक सेवा भाव से हमारा बस यूं ही एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, कारवां बनते जा रहा है। आप लोगों का प्रेम भी बहुत मिल रहा है, क्योंकि हमारा कारवां बहुत लंबा होने की दिशा में बहुत जल्दी अग्रसर है, तो मन भी बहुत लगता है। तो इसलिए हमारा ध्येय सिर्फ ये है कि जो मिडिल हैं, जो निम्न वर्ग के हैं, मिडिल क्लास या जो सब्सक्रिप्शन वाले या प्रीमियम वाले चैनल को नहीं देख सकते हैं, उनके लिए मेरा इस YouTube चैनल CM झा अकेडमी बिल्कुल 100% एब्सोल्युटली फ्री है। इसमें कहीं कोई हिडन चार्ज नहीं है और आप सारे वीडियोस को आसानी से YouTube स्ट्रीमिंग में देख सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज जो सर्ड्स की बातें हैं, सर्ड्स कहते किसको हैं। सर्ड्स, सबसे पहली बात हम जान लें कि घातांक सर्ड्स किसको बोलते हैं। वैसे नंबर जिसका अंडर रूट निकालना संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। नंबर का स्क्वायर रूट एग्जैक्टली ऑब्टेंड नहीं कर पाते हैं, नॉट ऑब्टेंड एग्जैक्टली स्क्वायर रूट। जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट आप एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते हैं, वो सर्ड्स कहलाता है। जैसे एग्जांपल में √2, √3, √5, √7 etc. ये सारे चीज क्या है, ये सारे चीज सर्ड्स हैं। आप √2 को लिखेंगे क्या, 2 पर हाफ, √3 को 3 पर हाफ। आप मान लीजिए √5 नहीं, ये क्यूब √5 था तो 5 पर 1/3, 4 7 था, 7 पर 1/4। ये जो अदर फॉर्म है, और इसको आप बोल सकते हैं कि ये इसी का सेम सिंपल का फॉर्म है। तो इसे हम लोग बोलते हैं घातांक, यानी सर्ड्स। तो सर्ड्स का जो मेन इंपॉर्टेंट है, पढ़ने की क्या जरूरत है, आपको 2-3 चीजें इसमें क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे बड़ी बातें जो क्वेश्चंस आती है वो क्वेश्चंस है आपका कि आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में निकालने के लिए बोला जाता है। सबसे बड़ी बातें हैं कि आपके जैसे कि इसको बोला जाएगा कि इसमें कौन सा असेंडिंग व डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉल्व करिए, असेंडिंग व डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको निकालिए। तो इसमें से जो करनी है, 2 पर 1/2, 3 पर 1/2, 5 पर 1/3, 7 पर 1/4, आप इसके पावर का एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं और आप दिखा सकते हैं। जैसे मान लिया जाए आपको कहेगा असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते क्रम, तो बढ़ते क्रम कहे या घटते क्रम कहे, दोनों में आपको एक ही चीज करना है। अभी आप एग्जांपल लेते हैं √2, 3√5, 4√6, 3√8। इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 2 है, तो 2, 3, 4 और 3, इसका एलसीएम आप निकालेंगे। 2, 3, 4, 3 कितना आ जाएगा, 12। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 12, 2 पर यहाँ क्या था, कुछ नहीं था, अभी 12 हो गया, तो यानी यहाँ कितना हो जाएगा,
6 2 6 जा 6 2 जा 12 3 पर 5 4 4 6 पर 3 3 8 पर 4। अभी सबके सॉरी यहाँ 12 करेंगे सबका 12। अभी यहाँ पर जो आपके पास आ गए, अभी इसमें से क्या करना है कि देखिए आपका जो इंडिसेस हैं वो 12 12 12 12 आ चुका। तो अंदर के नंबर को अगर आप कंपेयर कर लेते हैं तो आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का पता चल जाएगा। जैसे इसको क्या लिख सकते हैं 12 6 कितना हो जाता है 64, 12 5 पर 4 कितना हो जाता है 625, 12 6 का क्यूब कितना हो जाता है 216, 8 का 4 कितना हो जाता है 64 इंटू 64 कितना हो जाएगा 96, तो 12 4096। अभी आप देख लीजिए 12 4096। अभी आप ये देख लीजिए कि इसमें से बड़ा और छोटा कौन सा है। तो आपको लिखना था यहाँ पे कौन सा असेंडिंग ऑर्डर, दिस इज द बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में इसको आप कैसे लिखेंगे, सबसे छोटा कौन है, ये तो बढ़ते क्रम में है 12 64, फिर 12 216, फिर 12 625, फिर 12 40 96। ये बढ़ते क्रम में हो गया। 64 कौन था, 64 आपका था ये 2 पर 6 यानी 2√2 √2 सबसे बड़ा छोटा हो गया, असेंडिंग ऑर्डर है तो सबसे छोटा, फिर 4√6 सबसे छोटा, 3√5 सबसे छोटा, 3√8। दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर। सेम डिसेंडिंग ऑर्डर करेगा तो पलट के आप लिख सकते हैं। तो ये एक टॉपिक है आपका सर्च एंड इंडिसेस में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने का तरीका। नाउ सबसे बड़ा चीज आता है कि आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। आइए अभी हम लोग देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जोड़ घटाव, इसका जोड़ घटाव, इसका जोड़ घटाव, सर्ड्स का जोड़ घटाव कैसे करेंगे। तो आप दो चीज याद रखेंगे, सिमिलर और अनसिमिलर। सिमिलर सर्ड्स, नॉन सिमिलर। समान और असमान। तो समान सर्ट्स और असमान सर्ट्स किसे बोलेंगे, आप एग्जांपल से समझिए। अगर किसी 5 2√5 5√5 सबके नीचे में अंदर में जो आपके सर्ट्स हैं वो अगर सेम हैं तो दिस इज द सिमिलर। नाउ 3 5 4 7 अगर ऐसा दिया हुआ है यानी अंदर में जो सर्ट्स हैं वो अलग अलग हैं, दिस इज द नॉन सिमिलर। तो ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है दैट इज ओनली फॉर सेम यानी सिमिलर सर्ट्स। अगर सिमिलर सर्ट्स का आप जोड़ घटाव करते हैं तो ये हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। और जब सिमिलर सर्ट्स में एडिशन मल्टीप्लिकेशन करने की, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने की बारी आएगी तो कुछ नहीं करना है, 2√5 प्लस 3√5। अभी देखिए ये भी √5 है, ये भी √5 है। मान लीजिए इसको हम लिख सकते हैं 2 आम, अगर सिंपल वे में समझें, प्लस 3 आम। एक तो ये तो कॉमन चीज हो गया ना, 2 3 5 आम यानी 5√5। सेम 2 आम माइनस 3 आम माइनस 1 आम, या 3 आम माइनस 2 आम 1 आम, सेम यहाँ पे सेम चीज आ जाएगा। तो जोड़ घटाव जब भी होना है सिमिलर सर्ट्स के बीच होगा, और गुना भाग जब भी होना है वो सिमिलर बा नॉन सिमिलर दोनों के साथ हो सकता है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं इसका गुना भाग। नाउ
मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, गुणा और भाग। अगर सर्ट्स का गुणा और भाग करेंगे तो सर्ट्स के गुणा भाग करने में कोई जरूरत नहीं है सिमिलर और नॉन सिमिलर देखने का। बोथ सिमिलर एंड नॉन सिमिलर का ऑपरेशन हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अभी मान लिया जाए 2√5 इंटू 3√5। अगर ये सिमिलर सर्ट्स के बारे में हम कोई भी ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो आपका जो रेशनल नंबर है 2 इंटू 3 एक जगह करिए, मल्टीप्लिकेशन √5 इंटू 5 एक जगह करिए, दिस इज द 6 इंटू 5, दिस इज द 30। अगर मान लिया जाए अलग अलग है 2√3 इंटू 4√5, नाउ 2 इंटू 4 एक साथ करिए, मल्टीप्लाई 3 इंटू 5, 8√15, दिस इज द सिमिलर। अगर डिवीजन की बारी आप करिए 2√5 डिवाइडेड बाय 3√5, मतलब 2√5 डिवाइडेड बाय 3√5 कैंसिल, 2/3। अगर अलग अलग हैं 2√3 डिवाइडेड बाय 4√5, 2 2 जा 4, √3 बाय 2√5। सिंपल सा चीज है। तो ये आपका जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है ये सिमिलर एंड नॉन सिमिलर बोथ सर्ट्स में आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो सर्ट्स में आप जोड़ घटाव जान गए, सर्ट्स किसे कहते हैं इसको समझ गए, इसका जो आपका सर्ट्स का अरेंजमेंट है, घटते क्रम बढ़ते क्रम, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, उसको आपने समझ लिया। तो नाउ जो एक इंपॉर्टेंट चीज आती है सर्ट्स में, दिस इज द रैशनलाइजेशन। इसको बोलते हैं हर परिमेयकरण। तो कोई भी सर्ट्स में यानी अलजेब्रिक ऑपरेशंस में हम नीचे में सर्ट को सिंपल सी कोशिश रहेगी, क्या कोशिश रहेगी? किसी भी तरह से ये कोशिश रहेगी कि डिनोमिनेटर में सर्ट्स नॉट अलाउड, यानी जो हमारा p/q है, दिस इज द डिनोमिनेटर, इन है हर, तो हर का परिमेयकरण कर देना, यानी हर को परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित कर देना। हर परिमेयकरण का मतलब क्या होता है? हर को परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित करना। यानी आपको कोई नंबर दिया है, उसके नीचे से आप बोर्ड मास लगाकर येन केन प्रकारेण आप उसका हर परिमीकरण कर देंगे, यानी जो डिनोमिनेटर है उसे रेशनल नंबर में बदल देंगे। तो रेशनल नंबर में बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही आसान सा तरीका है, आप थोड़ा सा ध्यान रखें। क्या तरीका है? जैसे मान लिया जाए आपके पास √a प्लस √b बाय √c प्लस √d दिया हुआ है, इसका हमको हर परिमीकरण करना है, रेशनलाइजेशन करना है। आप ऊपर वाले पे कुछ नहीं ध्यान देंगे, 100% कंसंट्रेट रहेंगे डिनोमिनेटर पे, क्योंकि आपका जो रेशनलाइजेशन करना है वो डिनोमिनेटर का करना। तो इसको कैसे करेंगे? कुछ ये साइन जो भी रहेगा, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, अल्टर करेंगे। क्या करेंगे? √c माइनस √d बटे √c माइनस √d। सेम चीज से एक बार मल्टीप्लाई किया, एक बार डिवाइड किया, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसको हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो बोलते हैं कि आपका कोई अंतर इस पे पढ़ने वाला, सॉरी कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं, रेशनलाइजेशन बोलते हैं कि इससे आपका कोई अंतर पड़ेगा नहीं। कंपोनेंडो डिविडेंडो अलग चीज है, वो हम लोग आगे बताएंगे जब जरूरत पड़ेगी। तो इसमें क्या होगा कि ये दो तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, √a प्लस b मल्टीप्लाई c माइनस d बाय √c प्लस d इंटू c माइनस d। क्या फॉर्मूला होता है?
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपने पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है, सबको मालूम होगा। तो इसको हम लोग नीचे लिख सकते हैं अंडर रूट सी का स्क्वायर माइनस अंडर रूट डी का स्क्वायर, यानी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी माइनस अंडर रूट डी बाय सी माइनस डी। तो नीचे का स्क्वायर रूट खत्म हो गया, देन दिस इज द रेशनलाइज्ड, यानी रेशनलाइज हो गया। और यही बेसिक फंडा किसी भी क्वेश्चंस में आप ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखिए, मान लीजिए 2 बाय रूट 3 प्लस रूट 4 है। आप क्या करेंगे, इसको रूट 3 प्लस रूट 4 है तो मल्टीप्लाई रूट 3 माइनस रूट 4 बाय रूट 3 माइनस रूट 4, 2 इंटू रूट 3 माइनस रूट 4 बाय रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 4 का स्क्वायर माइनस रूट 4 का स्क्वायर। दिस इज द 2 अंडर रूट 3 माइनस 4 बाय 3 माइनस 4, यानी 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 4 बाय 3 माइनस 4 माइनस 1। दिस इज द 2 रूट 4 माइनस रूट 3, यानी इसको लास्टली क्या लिखेंगे आप, 2 अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 3। दिस इज द योर आंसर। तो ये चीजें हैं आपके पास, बिल्कुल ही आसान सा तरीका। अब रही बात शॉर्ट ट्रिक्स का, आप जब किसी और बहुत सारी जगह देखेंगे या मिलेगा इसमें आपको डायरेक्ट ये लिखा के ये वाला आंसर पलट देना, रूट 4 माइनस रूट 3 कर देना। अगर बेसिक आइडिया नहीं रहेगा तो आप फंस जाएंगे। तो आपके लिए आपका दोस्त इंजीनियर सीएम झा ऑलरेडी हर वक्त एकदम बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री वीडियोस लेके हाजिर है। आप भी चिंतित ना हो, रेगुलर वीडियोस को देखें, बनाएं, बेसिक्स से बताएंगे और एक एक क्वेश्चन करेंगे, एक एक चीज को सॉल्व करेंगे, एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, लेकिन कहीं कोई समस्या आने हम लोग नहीं देंगे। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए और रेगुलर वे में कोशिश करते रहिए। आप लोगों के लिए मैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज और जो रेलवे के जुड़े हुए हैं या फिर जिन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत रहती है, मैं आप लोगों के लिए एक जानकारी और दे दूं। मैं www.chandramoleshwar.com करके एक वेबसाइट बनाया है, जिसपे मैक्सिमम इंपॉर्टेंट चीज डाल के रख दे रहा हूं। जिन्हें भी जरूरत हो आप उस पे जाएं, डाउनलोड करें, पढ़ें। एम्प्लॉयमेंट न्यूज रेगुलर अपडेट करने का प्रयास कर रहा हूं, डाल भी रहा हूं। आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज आपसे कोई भी एग्जाम छूटे नहीं, उसका भी भरपूर प्रयास है। और हाँ, उसमें एक और ब्लॉग चलता है, वो है गप्पू की रसोई। तो हमारे जो अभी के समय में क्या है कि चाइनीज फूड के हम बच्चे, हम स्टूडेंट्स या जो भी हो फैमिलियर आदि हो गए, तो घरेलू फूड जो दादी नानियों के पुराने फूड हुआ करते थे, हमारे जो स्वस्थ और हेल्दी फूड हैं उनके बारे में गप्पू की रसोई में ब्लॉग्स डाले जा रहे हैं, जो बहुत ही पॉपुलर होता जा रहा है। बहुत ही कम समय में एवरेज 200 से 250 व्यूज पर डे आ रहे हैं। तो आप भी देखें, जाएं, फायदे उठाएं। हर रोज एक ब्लॉग्स अपडेट हो रहा है और आपके लिए हर रोज नए वीडियोस भी डाल रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स भी डाले जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें आपको मिल रही है। तो क्या कहेंगे, विशेष यही है कि आप हमारे YouTube चैनल को भी रेगुलर देखते रहें, सब्सक्राइब करें, ब्लॉग्स को देखें, हमारे वेबसाइट पे जाएं। वेबसाइट का लिंक हम वीडियोस में भी डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में नीचे, आप बिल्कुल देखें और अपने जीवन में फायदे उठाएं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में एक अगला टॉपिक लेके, दैट इज द नंबर सिस्टम। दोस्तों नमस्कार, मैं इंजीनियर सीएम झा आपके साथ हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल सीएम झा एकेडमी पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंडियन रेलवे में कितने पे पर किस लेवल पर क्या पेमेंट मिलता है आपको और क्या क्या सुविधाएं मिलती है। दोस्तों हम नौकरी तो करते हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त मित्र तैयारी करते हैं सर्विस में आने के लिए, लेकिन ये पता नहीं रहता है कि आप जहां जा रहे हैं या जिस जगह पे नौकरी कर रहे हैं तो सरकार ने आपके लिए क्या क्या सुविधाएं दे के रखी है या क्या क्या सुविधाएं
आपके लिए बनाया गया है। तो चलिए, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल CM झा एकेडमी पर। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, एक टॉपिक बनाने जा रहे हैं। दिस इज द अकॉर्डिंग टू पे। आप एक चीज जान लें कि इंडियन रेलवे में ये मैक्सिमम, दिस इज द अकॉर्डिंग टू पे, नॉट अकॉर्डिंग टू डेजिनेशन। डेजिनेशन अकॉर्डिंग टू बेनिफिट नहीं मिलता है, डेजिनेशन के अकॉर्डिंग टू वर्क डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट अकॉर्डिंग टू डेजिनेशन आपको कोई सुविधाएं नहीं मिलती है। दिस इज द अकॉर्डिंग टू पे। आप किस पे बैंड में हैं, आपका पे क्या है, आपकी बेसिक क्या है, उस पर डिपेंड करता है तो आपका क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो आप सबसे पहले इंडियन रेलवे में जो कर्मचारी हैं उनके हिसाब से आप देख लें कि इसमें होता क्या है। फर्स्ट थिंग इज द लेवल, आप किस लेवल में नौकरी कर रहे हैं, आप किस लेवल में नौकरी कर रहे हैं। जिस लेवल में नौकरी कर रहे हैं उसमें उसको आपको पे क्या मिलेगा एंड स्केल क्या रहेगा आपको मिलेगा। सेकेंड चीज जो है, आपको बेसिक्स और पे इस बारे में जानकारी अगर हो गई कि क्या पे मिलेंगे, क्या स्केल रहेगा, देन आपकी बेसिक्स की लेवल एंड जीपी आप कर दें, किस लेवल में आपकी जीपी क्या होगी। एंड थर्ड चीज जो है, आपको क्वार्टर, रेलवे में एक सबसे बड़ी सुविधा है कि आपको जिस भी स्टेशन पे आप नौकरी करेंगे वहां आपको क्वार्टर रेलवे के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। क्वार्टर, किस टाइप के क्वार्टर आपको वहां पे मिलेंगे। तीसरी चीज है जो रेलवे की सबसे बड़ी सुविधा है कि आपको पास दिया जाता है। दिस इज द ड्यूटी पास, प्रिविलेज पास और पीटीओ पास होते हैं, जिसपे कि आप 100% फ्री यात्रा कर सकते हैं ट्रेन में। और पीटीओ जो होता है उसमें 1/3 कुछ पैसे लगते हैं। नाउ पास की सुविधाएं आपको क्या क्या मिलेगी और मेडिकल फैसिलिटी का कैसा आपको मिलेगा। दिस इज द 4-5 टॉपिक आपके लिए है। तो मैं अभी जो बात करूंगा आपसे लेवल 1 टू लेवल 2 पे हैं। ये लेवल 1 का जो जीपी होता है, ग्रेड पे होता है, दिस इज द 1800। लेवल 1 का जो ग्रेड पे होता है वो 1800 का होता है। 1800 ग्रेड पे में जब आप नौकरी करेंगे तो आपको बेसिक कितना मिलेगा। पे आपका हो जाता है 18,000 बेसिक मिलेगा, प्लस जो डीए प्लस एचआरए प्लस टीए प्लस ओटी जो भी एडमिसिबल है। जैसे अभी डीए 17, अभी डीए कितना है, नाउ एट प्रेजेंट में डीए है 17%, टीए अकॉर्डिंग टू 800 रुपये प्रतिदिन का मिलता है 12 घंटे का, प्लस आपका एचआरए 8% मिनिमम, 3 रेंज हैं, ओटी अकॉर्डिंग टू हिसाब से। तो ये सारे प्लस एनडीए, दिस इज द नाइट ड्यूटी अलाउंस, एनडीए भी आपको इस पे मिलेगा। तो आप ये चीज देख सकते हैं कि आपको ये सारे चीजें 1800 ग्रेड पे में मिलने जा रहे हैं। तो 1800 सारे ग्रेड पे वालों को बेसिक के साथ इतना सारा चीज मिलता है। प्लस तो ये 18,000 ये डीए बेसिक हो गया। नाउ इस जो लेवल 1 है, लेवल 1 में आपको जो टाइप ऑफ क्वार्टर मिलेंगे, लेवल 1 में टाइप ऑफ क्वार्टर आता है टाइप 1। लेवल 1 में जो टाइप ऑफ क्वार्टर मिलेगा दिस इज द टाइप 1। और पास जो मिलेगा सेकेंड क्लास यानी कि स्लीपर क्लास का, सेकेंड क्लास का पास मिलेगा आपको लेवल 1 में। मेडिकल फैसिलिटी जो है, मेडिकल फैसिलिटी भी मिलता है आपका पे के आधार पे, यहाँ पे कोई डेजिनेशन का आधार नहीं रहता है। तो मेडिकल फैसिलिटी में सारे हॉस्पिटल में 3 कैटेगरी बांटा गया है, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट वार्ड और प्राइवेट वार्ड। तो मेडिकल फैसिलिटी की अगर बात करें हम तो अप टू 47,600 अगर आपका पे, अप टू 47,600 तक आपको जनरल वार्ड मिलेगा। अप टू 47,600 तक आपको जनरल वार्ड मिलेगा। नाउ अगर हम बात करें ग्रेड पे आगे और सेकेंड क्लास स्लीपर क्लास, ये पास की फैसिलिटी आपको मिलेगी। इस पास की फैसिलिटी में भी एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस पास की फैसिलिटी में आपको अप टू 5 ईयर ऑफ सर्विस
अब 5 साल की नौकरी तक सिंगल 1 सेट बोलते हैं इसको, 1 सेट पास आपको मिलेगा। 1 सेट का मतलब हुआ कि एक बार आपको साल भर में जाना और एक बार में आना। दिस इज द पास, 1 सेट पास मिलेगा आपको एक साल में 5 साल की नौकरी तक। नाउ अगर हम चलें लेवल 2, दिस इज द लेवल 2। लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 का जो ग्रेड पे होता है दिस इज द 1900। लेवल 2 का ग्रेड पे हो जाएगा आपका 1900, और 1900 ग्रेड पे में जो आपके पे आएंगे 19,900, ये हो जाता है आपका बेसिक। यहां से बेसिक को मैं मिटा दूं, ये पूरे पे में आ जाएगा। 19,900 आपका बेसिक हो जाएगा, प्लस ये सारे चीज डीए टीए ओटी जितना भी चीज है ये सारा चीज मिलेगा। ये आपके पे में आ जाएंगे 1900 ग्रेड पे वालों को। आपका जो क्वार्टर हो जाएगा यहां से टाइप 1 क्वार्टर ओनली 1800। ये ऑल आर ग्रुप डी स्टाफ, जितने भी 4th ग्रेड के स्टाफ हैं सब 1800 ग्रेड पे में आते हैं। जितने भी 1900 ग्रेड पे में आ जाते हैं ग्रुप सी स्टाफ, जो 1900 ग्रेड पे से ग्रुप सी स्टाफ शुरू हो जाती है। तो इसको आपको मिल जाता है टाइप 2 क्वार्टर। टाइप 2 क्वार्टर आपको मिल जाएंगे। ये 1 BHK हो गया, ये 2 BHK हो गया। अगर आपको समझें तो टाइप 1 इज द 1 BHK, टाइप 2 इज द 2 BHK। 2 BHK का क्वार्टर आपको मिलेगा। आपको जो पास फैसिलिटी मिलेगी 1900 ग्रेड पे वाले को, इसको भी 2nd क्लास स्लीपर का पास मिलेगा, सेम अप टू 5 साल तक 2nd क्लास मिलेगा, सेम आपको 5 साल तक। और इसमें से जब आप 3 पास के हकदार हो जाएंगे, 2nd क्लास स्लीपर पास, तो जब आप 3 पास के हकदार हो जाएंगे तो साल में अभी मिलता है एलो पास, मैं आगे बताता हूं आपको। 2nd क्लास और मेडिकल फैसिलिटी, तो आपका बेसिक यहाँ 47,600 जा नहीं रहा है, देन आपको मेडिकल फैसिलिटी 47,600 तक ओनली जनरल वार्ड ही मिलेगा। जनरल वार्ड से आगे आपको नहीं मिलेगा। नाउ हम चलते हैं लेवल 3। लेवल 3 होता है 2000 जीपी। 2000 जीपी में जब 100 प्लस सारा चीज, जनरली इस ग्रेड में आरपीएफ आते हैं। 21,000 2000 के बेसिक पे आरपीएफ का जो कांस्टेबल होता है उनकी वैकेंसी आती है 700। क्वार्टर टाइप यहां भी आपको 2000 ग्रेड पे में भी टाइप 2 ही मिलेगा, और पास 2nd क्लास ही मिलेगा, पास 2nd क्लास ही मिलेगा। 9 जब लेवल 4 में आएंगे तो ग्रेड पे इज द 2400। 2400 ग्रेड पे का जो बेसिक होता है 25,500, 25,500 प्लस ये सारे चीज एडमिसिबल रहेंगे। यहां भी आपको 2400 ग्रेड पे में भी आपको क्वार्टर टाइप 2 ही मिलेगा। 2400 ग्रेड पे में भी टाइप 2 का क्वार्टर मिलेगा, और 2nd क्लास का स्लीपर का पास मिलेगा। और इन तीनों को, जिनको 2nd क्लास का स्लीपर पास मिल रहा है, इन सारे को 1 सेट, जब आपको 3 सेट पास मिलने लगेंगे साल के 5 साल के बाद, तो 1 सेट 2nd AC, दिस इज द एलो पास मिलेगा। जब आप 5 साल नौकरी कर लेंगे, 3 सेट पास का इंटाइटल्ड हो जाएंगे, तो आपको 1 सेट येलो कलर का पास मिलेगा। ये 2400 ग्रेड पे तक है। लेवल 5 में आप जाएंगे, दिस इज द ग्रेड पे 2800। 2800 ग्रेड पे का जो बेसिक हो जाता है, दिस इज द 29,200, 29,200 प्लस सारे चीज मिलेंगे। और यहां से आपके क्वार्टर का टाइप बदल जाएगा। दिस इज द 3 BHK, आपको 3 BHK का क्वार्टर मिलेगा। और पास भी 2nd AC, दिस इज द येलो कलर का पास मिल जाएगा। 1st क्लास 2nd AC, यानी AC 2 इसको बोला जाता है।
सेकेंड क्लास AC2 भी बोला जाता है, एलो पास मिल जाएगा। और मेडिकल फैसिलिटी कुछ परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि बेसिक आप 47,600 पे नहीं जा रहे हैं पे में। नाउ जब लेवल 6 में आप जाएंगे, लेवल 6 में चले जाएंगे तो ये ग्रेड पे हो जाएगा आपका 4200 का, 4200 का। और 4200 का ग्रेड पे का जो बेसिक हो जाता है, दिस इज द 35,400 प्लस जितने सारे हैं एडमिसिबल वो मिलेंगे। इसके लिए जो क्वार्टर टाइप हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो टाइप 3 और पास ये ग्रीन पास हो जाता है फर्स्ट क्लास AC इंक्लूडिंग राजधानी प्लस शताब्दी। ये सारी ट्रेनों को कवर आप कर सकते हैं। ये सारे पास आपको मिलना शुरू हो जाएंगे ग्रेड पे 4200 से। लेवल 7 में जब आप जाएंगे ग्रेड पे हो जाएगा 4600 जब आप चले जाएंगे तो इसका जो बेसिक होता है, दिस इज द 44,900 प्लस जितने सारे आपको एडमिसिबल मिलने वाले हैं वो मिलेंगे। और यहाँ पे आके फिर आप में परिवर्तन आ जाएगा। जो क्वार्टर का टाइप है, दिस इज द 4 आ जाएगा, 4 BHK यानी बंगलो टाइप, ये टाइप 4 का होता है। और पास की फैसिलिटी सेम रहेगी। जब आप यहाँ पे आ जाएंगे देन आपको फिर यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी में परिवर्तन आ सकता है। मेडिकल फैसिलिटी कहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो 47,600 से 63,100 तक, 47,601 टू 63,100, 47,601 टू 63,100 आपको सेमी प्राइवेट वार्ड की फैसिलिटी देगी मेडिकल में रेलवे। यहाँ पे जब आप 4600 ग्रेड पे में चले जाएंगे, जैसे कि हम लोगों को मिलता है, तो सेमी प्राइवेट में आपको फैसिलिटी मिल जाएगी 4600 ग्रेड पे तक पहुंचने के बाद। नाउ इसके बाद जब आप जाएंगे जनरली 4600 के बाद जब आप जाएंगे लेवल 8, दिस इज द ग्रेड पे 4800। 4800 का ग्रेड पे में जब आप जाएंगे तो यहां पर जो आपका बेसिक हो जाएगा, दिस इज द 47,600, 47,600 दिस इज द बेसिक प्लस जो आपके पे हैं वो मिलने लगेंगे। तो दिस इज द ग्रेड पे 4800 के लिए ये सारी सुविधाएं हैं। टाइप ऑफ द जो क्वार्टर होगा वो क्वार्टर टाइप 4 ही मिलेगा। टाइप ऑफ द क्वार्टर जो है वो 4 मिलेगा। लेकिन यहां पे आके एक परिवर्तन आएगा, पास जो है व्हाइट हो जाएगा। फर्स्ट क्लास पास में आपको व्हाइट पास मिल जाएगा। व्हाइट पास और ग्रीन पास दोनों फर्स्ट क्लास हैं, लेकिन डिफरेंस कितना है, फर्स्ट क्लास ग्रीन और फर्स्ट क्लास व्हाइट, दोनों का जो डिफरेंस है इसमें आपको सेकेंड AC में मिलेगा, दिस इज द फर्स्ट AC में आपको मिलेगा। दूसरी बात है क्या है कि इसमें जितने सारे हैं आपके कूपे हैं और केबिन है वो सारी फैसिलिटियां मिलेगी। और कुछ सीट का डिफरेंसेस रहेगा इसमें, जैसे राजधानी शताब्दी में इसमें 2 सीट, उसमें 1 सीट, 4 सीट, वो सारे एक डिटेल वाली चीजें हैं, दोनों हैं फर्स्ट क्लास हैं। तो ये 4700 जब आप लेवल 8 में जाएंगे तो ये परिवर्तन आपका आ जाएगा। नाउ जब आप चले जाएंगे लेवल 9 में ग्रेड पे 5400। अब दो चीज देखना है, लाइन लेवल 9 एंड लेवल 10 बोथ आर 5400 ग्रेड पे है। ये जो 5400 है ये ओनली 4800 से जो प्रमोशन लेके जाते हैं उन्हें ये 5400 का ग्रेड पे मिलता है। और इस 5400 का ग्रेड पे का बेसिक हो जाता है 53,100 और इन्हें भी क्वार्टर टाइप 4 होगा, पास व्हाइट ही मिलेगा, पास इनको व्हाइट कलर का ही मिलेगा। नाउ ये जो है दिस इज द UPSC से जो क्लास 1 ग्रुप ए डायरेक्ट आते हैं उनका ग्रेड पे यहाँ पे 5400 डायरेक्ट ये वाला मिलता है और इनका बेसिक हो जाता है 56,100। इन्हें भी टाइप 4 ही क्वार्टर मिलते हैं, पास व्हाइट पास ही मिलता है इनको भी। इसके अलावा फिर इसके बाद जो चलेंगे लेवल 11 का ग्रेड पे हो जाता है 6600
6600 जब ये प्रमोट होके आगे बढ़ते हैं तो इनका प्रमोशन के बाद 6600 का आ जाता है और बेसिक हो जाता है 67,700। टाइप 4 में क्वार्टर इनको मिलेगा टाइप 4 स्पेशल, उनमें थोड़ा सा मॉडिफाइड होता है। पास इज द फर्स्ट क्लास वाइट पास। और 9 इसके बाद जो लेवल 12 है, लेवल 12 का जो ग्रेड पे होता है दिस इज द 7600। और 7600 ग्रेड पे में जब आप चले जाएंगे तो 78,800 आपका पे हो जाएगा और क्वार्टर का टाइप हो जाएगा 5। क्वार्टर का टाइप हो जाएगा 5। 9 यहाँ पे आके इस ग्रेड पे आके आप जिस भी डिपार्टमेंट से हैं, जिस डिपार्टमेंट से हैं उसका ब्रांच ऑफिसर में आ जाएंगे। दिस इज द सीनियर और डिप्टी, यानी दैट मीन्स इक्विवेलेंट टू एजीएम। इस रैंक में आप आ जाएंगे और ये आपका पूरा रेलवे का पे के साथ पास और क्वार्टर का बेनिफिट का डिटेल मिल जाएगा। तो धन्यवाद। शायद आपको ये पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा YouTube चैनल है CM झा एकेडमी और हमारा वेबसाइट है www.chandramoleshwar.com। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल CM झा एकेडमी पर। आज हम लोग बात करेंगे रेलवे के GDCE एग्जाम के बारे में। जी हाँ, GDCE। आज हम लोग बात करेंगे रेलवे के GDCE जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जी हाँ, जैसा कि हमारे जो साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन है जिसमें मैं भी नौकरी करता हूँ, तो इस जोन से नोटिफिकेशंस अप्रैल माह में आने वाली है। लास्ट लगभग 24 मार्च से 24 अप्रैल, जी हाँ 23/4/20 के बीच में फॉर्म फिलअप होने की संभावना है। तो उन सभी दोस्तों बंधुओं को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए पूरी जानकारी लेके आया हूँ GDCE के बारे में कि कौन फॉर्म भर सकते हैं, कौन उनके लिए एलिजिबल है, क्या क्राइटेरिया है, किस किस सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होंगे और कितने क्वेश्चंस रहेंगे और उसमें किस किस टॉपिक के क्वेश्चन रहेंगे। तो जितनी सारी चीज़ें एग्ज़ाम के बारे में होनी चाहिए मैं सारी जानकारी आपको देने का प्रयास करूँगा और आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो आइए, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CM झा एकेडमी में। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों फटाफट इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिससे कि वो भी जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें और सबके पास तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचते रहें। और तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले कि GDCE एग्जाम जो होता है ये किसके किसके लिए होता है और क्या क्या इसके क्राइटेरियाज हैं। तो GDCE एग्जाम दोस्तों दो जनरली जो हमारा नॉन टेक्निकल कैटेगरी है, GDCE एग्जाम जनरली जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी है उसी के लिए होता है। तो GDCE जो एग्जाम होंगे जनरली वो दो साउथ ईस्टर्न दोनों एग्जाम कंडक्ट कर चुकी है। एक 2017 में नोटिफिकेशंस आया था, एक 2018 में आया था, जिसमें से एक जो है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और दूसरा ASM गुड्स गार्ड। ये जो दो पोस्ट हैं, इन दोनों पोस्टों के लिए GDCE कंडक्ट की है साउथ ईस्टर्न रेलवे SER,
साउथ ईस्टर्न रेलवे, ये 2017 में हो चुका था, सॉरी ये 2018 का नोटिफिकेशन था जो 2019 में एग्जाम हुआ, ये 2017 का नोटिफिकेशन था जो 2018 में एग्जाम हुआ था। बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे हमारे जो जूनियर्स हैं वो एग्जाम पास कर चुके हैं, जा चुके हैं। तो मैं पिछले बार भी बहुत बच्चों को बहुत सारे सलाह दिया था, बहुत उसमें से भी पहुंच गए। तो इस बार मैं, उस बार मैं ऑफलाइन सलाह दिया था, इस बार मैं ऑनलाइन हूँ। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ये जो जूनियर क्लर्क और एएसएम गुड्स गार्ड का पोस्ट है, ये पोस्ट है क्या? तो सबसे पहले आप जान लें, ये जो पोस्ट है ये जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, दिस इज द ग्रेड पे 1900। ये जो ग्रेड पे की नौकरी है 1900 की, यानी लेवल 2 की नौकरी है। ये जो नौकरी है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये ग्रेड पे 1900 की नौकरी है और लेवल 2 की नौकरी है। तो सबसे पहली बात है कि जब आप किसी पोस्ट पे प्रमोट हो रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, देन आप किस लेवल से जाएंगे? नीचे की लेवल से जाएंगे। तो आपका ग्रेड पे जो 1900 है एंड लेवल 2 है, इसमें सबसे पहली बात हमारा होता है कि मुझे ये पता नहीं रहता कि मुझे पे कितना मिलने वाला है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि 1900 ग्रेड पे में जो आपको पे मिलेगा, तो जितने भी 1900 जीपी वाले होते हैं उसका बेसिक होता है 19,900 प्लस इसके साथ आपको डीए दिया जाएगा जो अभी के टाइम में 17% है। अगर आप एचआरए के इंटाइटल्ड हैं, आपने क्वार्टर नहीं लिया है तो एचआरए मिलेगा। ये एचआरए कितना है? अभी के समय में 3 पार्ट में बटा है, तो मैं मिनिमम अगर मान लूं तो 8% है, प्लस नाइट ड्यूटी अलाउंस, प्लस ओटी, प्लस टीए। ये जितने सारे चीज हैं, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में ओटी नहीं होता है, तो मैं इस ओटी को हटा दूं तो प्लस टीए, ये सारी चीजें आपके पे में आ जाएंगी। तो एक तो यहाँ पे ये चीज मिलेगा। दूसरा बात क्या है कि इसका जो क्वालिफिकेशंस है वो क्या रहेगा? फॉर्म भरने का जो क्वालिफिकेशंस है वो क्वालिफिकेशंस क्या होगा? तो दोस्तों जो भी क्वालिफिकेशंस आरआरबी के द्वारा, जी हाँ आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जितनी सारी क्राइटेरिया, जितनी भी कैटेगरी, जो भी क्वालिफिकेशंस है, सेम क्राइटेरिया क्वालिफिकेशंस आपको लिया जाएगा आपका आरआरसी एग्जाम में, जिसमें से क्वालिफिकेशंस क्या है? 10+2 और एचएससी हायर सेकेंडरी दोनों इक्विवेलेंट होता है आपस में। ये जो है 50% मार्क्स से आपको पास करना है, विथ 50% मार्क्स। 10+2 एचएससी विथ 50% मार्क्स से पास करना है। प्लस जो टाइपिस्ट या स्टेनोग्राफर के लिए ले रहे हैं उनके लिए एडिशनल होगा। जनरली टाइपिस्ट या स्टेनोग्राफर ही पोस्ट इसमें रहता है, तो एडिशनल है कि या तो आपको टाइपिंग आना है या फिर शॉर्ट हैंड आना है। तो टाइपिंग प्रोफिशिएंसी और शॉर्ट हैंड, ये आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं। ये आप एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आपके लिए जरूरी है इसके लिए। दूसरी बातें हैं कि इसको भर कौन सकते हैं? स्टाफ एलिजिबल कौन हो सकता है? स्टाफ एलिजिबल कौन हो सकता है? इसमें जो स्टाफ एलिजिबल होंगे, चूंकि ये कितने का है? 1900। जी हाँ, जो ये हमारा जो जॉब है दिस इज द 1900 ग्रेड पे का। तो यहां पर जो स्टाफ एलिजिबल है, स्टाफ वर्किंग 1800 जीपी। जो स्टाफ 1800 ग्रेड पे में नौकरी कर रहे हैं, जो स्टाफ 1800 ग्रेड पे में नौकरी कर रहे हैं, वो इसको फिलअप कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो अब जो सबसे बड़ी बात आती है कि एग्जाम किस किस टॉपिक के होंगे। तो आपका जो एग्जाम होगा सेम, मैं उस चीज पे आऊंगा, लेकिन एएसएम गुड्स गार्ड के साथ, क्योंकि दोनों का एग्जाम टॉपिक सेम है, सिलेबस सेम है, एग्जाम का तरीका सेम है, मोड ऑफ सिलेक्शन सेम है। 1800 ग्रेड पे में नौकरी कर रहे हैं चीजों का है। जो स्टाफ 1800 ग्रेड पे जूनियर क्लर्क कर रहे हैं वो इसको का था सेम कर सकते हैं। एएसएम गुड्स गार्ड में जब आप चले जाएंगे, अब जो सबसे बड़ी बात आती है कि एएसएम गुड्स गार्ड किस किस टॉपिक के
होंगे तो आपका जो एग्जाम होगा सेम मैं उस चीज पे आऊंगा, लेकिन एएसएम गुड्स गार्ड के साथ, क्योंकि दोनों का एग्जाम ये जो एएसएम दोनों ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का पोस्ट एग्जाम का तरीका सेम है, मोड ऑफ सिलेक्शन सेम है। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट मतलब परिचालन, आप सभी रेल से जुड़े हुए व्यक्ति है तो मालूम है परिचालन। इसमें से जो एएसएम का पोस्ट है, एएसएम का पोस्ट इज द ग्रेड एएसएम गुड्स गार्ड में आप चले जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात एएसएम का जो पोस्ट है दिस इज द ग्रेड पे 42 पे बैंड 6, पे बैंड का लेवल क्या है 6। इसका जो बेसिक्स होता है सॉरी 35,400, इसका जो बेसिक्स आएगा दिस इज द 35,400। अब इसके साथ आपको प्लस सेम चीज पे की अगर बात करें तो 35,400 प्लस डीए एचआरए टीए, इसमें ओटी भी होता है अगर ओवर टाइम आपने किया है तो इतने सारे चीज आपको मिलेंगे एएसएम में। अब रही बात कि एएसएम में 4200 ग्रेड पे में फॉर्म कौन कौन भर सकता है, तो एएसएम में जो 4200 ग्रेड पे में आप फॉर्म भरेंगे इसमें दो कैटेगरी है रेल में, एक सेफ्टी कैटेगरी एक नॉन सेफ्टी कैटेगरी। नॉन सेफ्टी कैटेगरी दिस इज द एएसएम। अगर हम गुड्स गार्ड की बात करें ग्रेड पे 2800 पीवी 5, दिस इज द पीवी 5 2800। इसका अगर हम पे की बात करें तो इसका बेसिक हो जाता है 29,200 पेमेंट। पे अगर की बात करें तो 29,200 प्लस डीए ओटी टीए जितने सारी चीज हैं वो मिलेंगे। इसके अगर हम बात करें तो इसमें भी सेम चीज है कि कौन भर सकता है फॉर्म, तो यहां पर भी अगर स्टाफ सेफ्टी कैटेगरी का है या नॉन सेफ्टी कैटेगरी का है इसको आपको देखना पड़ेगा। अगर आप नॉन सेफ्टी कैटेगरी में हैं और एएसएम का फॉर्म भरना है तो अप टू 4200 जीपी, यानी आप 4200 ग्रेड पे में भी नौकरी कर रहे हैं तो आप एएसएम के लिए पोस्ट भर सकते हैं, बाकायदा आप नॉन सेफ्टी कैटेगरी के हैं। और अगर सेफ्टी कैटेगरी में हैं तो अप टू 2800 जीपी। अगर आप सेफ्टी कैटेगरी में हैं तो 2800 जीपी में जो है वही फॉर्म भर सकते हैं 4200 ग्रेड पे का, तो 2800 या उससे नीचे वाला। 9 इसमें अगर सेफ्टी कैटेगरी में है तो 2400 जीपी तक फॉर्म भर सकते हैं और नॉन सेफ्टी कैटेगरी में है तो 2800 जीपी तक फॉर्म भर सकते हैं। 9 अभी हम चलते हैं कि इसके लिए जो ये तो हो गई फॉर्म भरने की। अभी जो अब एक मोड ऑफ एग्जाम आएगा तो एग्जाम में हमारा किस किस डिपार्टमेंट का मोड ऑफ एग्जाम क्या क्या रहेगा, तो जो दो तो मैंने जीडीसी में जो दो चीजें आपको बताई, सबसे पहला जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और दूसरा एएसएम गुड्स गार्ड। तो इसमें जो सबसे मायने रखता है कि आपको कौन सा मेडिकल कैटेगरीज में एक्सेप्ट किया जाएगा। तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में अगर आएंगे तो इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड होगा दिस इज मेडिकल स्टैंडर्ड इज द C1, दिस मेडिकल स्टैंडर्ड इज द C1। और अगर आप गुड्स गार्ड या एएसएम में जाना चाहते हैं तो इसका मेडिकल स्टैंडर्ड होगा A2, इसका मेडिकल स्टैंडर्ड होगा A2। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात मैंने किया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की। आप अगर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का फॉर्म भरेंगे तो इसके लिए 10+2 और हायर सेकेंडरी विथ 50% मार्क्स, 10+2 और हायर सेकेंडरी विथ 50% मार्क्स। और अगर एएसएम गुड्स गार्ड के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट कैंडिडेट ऑन एनी स्ट्रीम। आप अगर एएसएम गुड्स गार्ड के लिए फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको ग्रेजुएट ऑन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना है। और अगर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए अगर आपकी जीडीसीई है तो इसमें 10+2 है, एचएससी विथ 50% मार्क्स से आपको जाना है। इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड है C1 है, इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है A2 है। इसके अलावा जो मैंने आप लोगों को बता दिया अभी तक कि इसमें क्या पे मिलेंगे और कौन फॉर्म भर सकता है। 9 अभी हम आते हैं मोड ऑफ एग्जाम। मोड ऑफ
एग्जाम, ये सबसे बड़ी बातें हैं। हमें लगता है कि हम रेलवे में कर्मचारी हैं, रेलवे के थ्रू किसी और डिपार्टमेंटल एग्जाम देने जा रहे हैं, हमें बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगी, कुछ नहीं मिलने वाला है। मोड ऑफ एग्जाम जो इसका है, जस्ट लाइक RRB एग्जाम, जो आपका पॉपुलर कैटेगरी का NTPC का एग्जाम का सिलेबस है, जो उसका पैटर्न है, जो क्वेश्चन का लेवल है, सेम पैटर्न लेवल रहेगा जूनियर कलर कम टाइपिस्ट का और ASM गुड्स गार्ड का। दोनों में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, MCQ टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट ऑब्जेक्टिव रहेगा, एंड निगेटिव मार्किंग इज द मस्ट, निगेटिव मार्किंग पक्का रहेगा। दिस इज द 1/3। निगेटिव मार्किंग 1/3 का मतलब है कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन सही भी गलत कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि आप बहुत दिन से पढ़ाई छूटी हुई है, रेलवे पढ़ाई लिखाई से बाहर है, तो आपके लिए ये मुश्किल कर सकते। सबसे बड़ी बात है कि आप जब एग्जाम देंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ये आपका और गलत नहीं होना। एक्यूरेसी विथ स्पीड, एक्यूरेसी विथ स्पीड, इन सब की तैयारी के लिए CM झा एकेडमी पर जा सकते हैं। CM झा एकेडमी में हम ये सारे वीडियोस आपके लिए डाल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, अभी तीसरी बातें आती है कि जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होगा, MCQ टाइप एग्जाम होगा, उसका क्वेश्चन का सिलेबस या पैटर्न क्या क्या रहेगा। तो नॉर्मली आपके जो RRB एग्जाम लेते हैं, RRB एग्जाम के हिसाब से यहाँ पर भी आपके पेपर रहेंगे। सबसे पहले GA रहेगा, दिस इज द जनरल अवेयरनेस। दूसरा पेपर जो रहेगा, दिस इज द अरिथमेटिक, और ये जो अरिथमेटिक पे रहेंगे, दिस इज द 10th लेवल, यानी ओनली 10th लेवल के क्वेश्चन ही आपके अरिथमेटिक में पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस इसका कोई लेवल नहीं होता है, फिर भी इसे भी आप 10th मान लें। एंड NCERT की जो किताब है, NCERT की जो किताब है, अप टू फ्रॉम 6th to 10th, मैं सबसे अच्छी सलाह दूंगा कि आप GK जनरल अवेयरनेस के लिए ज़्यादा इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आप जो है 10th NCERT की किताब 6 to 10 तक की हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, साइंस सब अगर ढंग से पढ़ लें तो ये पैटर्न हो जाएगा। और अर्थमेटिक में 10th क्लास तक के अगर आपने अच्छी तरह से आपको जानकारी है नहीं है तो आप एक बेसिक किताब RS अग्रवाल की अर्थमेटिक को कर सकते हैं, जो आपके लिए फायदेमंद होगा और आप आसानी से उसको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो टॉपिक रहेंगे, दिस इज द जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस आप GA और जनरल अवेयरनेस और जनरल इंटेलिजेंस दोनों में बहुत अधिक अंतर आप नहीं कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट सेम ही होता है। तो जनरल अवेयरनेस में आपके जो भी सवाल है, करंट अफेयर्स हैं या कुछ SST हिस्ट्री के सवाल हैं, और जनरल इंटेलिजेंस में भी सेम उसी टाइप के सवाल आ जाते हैं। तो ये दोनों सेम हो गए। अरिथमेटिक में आ जाएंगे 10th लेवल के, प्लस एक टॉपिक रह जाएगा रीजनिंग। रीजनिंग भी कुछ क्वेश्चंस देंगे और टोटल क्वेश्चंस इज द 100, टोटल क्वेश्चंस 100 क्वेश्चन, टाइम 120 मिनट, 2 घंटे। आपको 2 घंटे समय दिया जाएगा, 120 मिनट्स मिलेगा और ये सारे 4 टॉपिक पे सवाल रहेंगे। 1/3 का निगेटिव मार्किंग रहेगा। जूनियर कलर कम टाइपिस्ट प्लस ASM गुड्स गार्ड दोनों का सिलेबस सेम रहेगा, लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा या रह सकता है, नहीं भी रह सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों ये थी आपके लिए पूरी जानकारी कंप्लीट GDCE के बारे में। इसमें से
जिस भी इंडियन रेलवे के जिस भी जोन से GDCE के रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, आप सभी हमारे दोस्त बंधुओं को गुड लक है कि आप भरपूर तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें और GDCE को पास करें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही बड़ा एक मौका है अपने करियर को ग्रोथ करने का, आगे बढ़ने का, आगे बढ़ाने का। धन्यवाद। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, लगे रहिए। आप CM झा एकेडमी जो YouTube चैनल है इसे देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशंस का बेल आइकन जरूर दबाइए। आपको नित्य नए नए वीडियो मिलते रहेंगे और पूरी एक सीरीज मिलेगी सारे टॉपिक्स के बारे में। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में। Looks like you lost another one. दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल CM झा एकेडमी पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रमोशनल चैनल की। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रमोशन चैनल की। प्रमोशनल चैनल जो है ग्रुप सी और ग्रुप डी स्टाफ का हमारे इंडियन रेलवे में कैसा है। तो इंडियन रेलवे में आज जो हम बात करने वाले हैं डिपार्टमेंट है S&T। जी हाँ, सिग्नल टेली कम्युनिकेशन। मैं भी चूंकि रेलवे से सिग्नल डिपार्टमेंट से ही हूँ, SSC सिग्नल सीनियर इंजीनियर सेक्शन इंजीनियर सिग्नल बाय CM झा SSE सिग्नल साउथ ईस्टर्न रेलवे। ये
क्योंकि मैं हूँ इसलिए मैं आज सबसे पहला क्लास, ऐसे मैं हर एक डिपार्टमेंट का बारे में चर्चा करूंगा, परंतु आज मैं चर्चा कर रहा हूँ सिग्नल के बारे में, क्योंकि मैं उसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ। तो आइए, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल CMJ एकेडमी पर। बिना लेट किए हम लोग शुरू करते हैं कि हमारे सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में ग्रुप डी और ग्रुप सी स्टाफ के लिए क्या कैडर है और क्या प्रमोशनल चैनल है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है। दिस इज अ सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का मतलब सिग्नल अलग है और टेलीकम्युनिकेशन अलग है। फॉर ग्रुप सी एंड ग्रुप डी, ये जो अलग अलग है ओनली फॉर ग्रुप डी एंड सी। जैसे ही आप उसके ऊपर ग्रुप बी या ग्रुप ए जाएंगे, ये डिपार्टमेंट कंबाइंड हो जाता है। तभी आप देखिए, अगर इसमें हम आप लेवल 1 को लें, दिस इज द ग्रुप डी। लेवल 1 को लें तो ग्रुप डी, इसमें जो हमारा डेजिग्नेशन होता है स्टाफ का, दिस इज द टीए, यानी टेक्निकल असिस्टेंट। जो सिग्नल से हैं उनके साथ सिग्नल जुड़ जाएगा, जो टेलीकॉम के हैं उनके साथ टेली जुड़ जाएगा। ये हमारा ग्रुप डी स्टाफ, जो रेलवे हमारी वैकेंसी निकाली हुई है ग्रुप डी का, उसमें सिग्नल में टेक्निकल असिस्टेंट सिग्नल और टेक्निकल असिस्टेंट टेली वो आएगा। इसका जो बेसिक रहेगा ग्रेड पे, दिस इज द 1800 जीपी में आएगा, और बेसिक जो रहेगा ये 18,000 प्लस टीए ओटी डी प्लस जो भी हो एनडीए, जितने सारे चीजें, ये सारे चीज उसको उसके साथ मिलेंगे। यहां से जब आप ग्रुप डी में मान लिया जाए कि अगर आप ग्रुप डी में आए, तो इसके बाद जो आपका प्रमोशनल चैनल है, यहाँ पे एक एग्जाम देना पड़ेगा, बाय ट्रेड टेस्ट इसको बोलते हैं, टेस्ट एग्जाम के बाद आप आ जाएंगे। दिस इज द लेवल 2 1900 जीपी में, और यहाँ पे आपका डेजिग्नेशन हो जाएगा टेक्नीशियन 3। तो ये हमारा 2 तरीके हैं, एक तो प्रमोशनल कोटा है, प्लस दूसरा डायरेक्ट भी है। ये जो टेक्नीशियन 3 है, ये एक प्रमोशनल चैनल है एंड डायरेक्ट भी है। इसमें हमारे इंडियन रेलवे से डायरेक्ट कोटा भी लेते हैं, जितना % लेना है वो अपना कैडर स्ट्रक्चरिंग के हिसाब से। नाउ टेक्नीशियन 3 का 1900 ग्रेड पे में आप आ जाएंगे। इसके पहले जो वीडियो है उसमें मैं सारा बता चुका हूं किस ग्रेड पे में कितना पे और क्या फैसिलिटी मिलेगी, तो मैं इस चीज को बार बार नहीं करूंगा। अगर आप देखना चाहें तो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं कि जो बेनिफिट्स हैं पे के आधार पे वो कितना मिलेगा रेलवे में। तो इसके बाद हम लोग चल सकते हैं टेक्नीशियन 3 डायरेक्ट बहाली, और ये हमारा प्रमोशनल चैनल से भी आ सकता है। सेम टेलीकॉम में भी सेम केस है। तो यहाँ पे आपके लेवल चेंज हो जाते हैं, यानी एक एग्जाम की बारी आ जाती है। नाउ आफ्टर 2 इयर्स आपको जो डेजिग्नेशन मिलेगा, दिस इज द टेक्नीशियन 2। परंतु ये टेक्नीशियन 3 से टेक्नीशियन 2, यहाँ पे लेवल 3 आ गया ग्रेड पे 2400, सॉरी लेवल ये 4 आ जाता है, क्योंकि 3 लेवल है 2000 का, वो हमारे इस कैटेगरी में नहीं है। और टेक्नीशियन 3 से टेक्नीशियन 2 आने के लिए 2 साल बाद आपको एक ट्रेड टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जो आपका ही डिपार्टमेंट वो टेस्ट कंडक्ट करती है आपके एक्सपीरियंस के आधार पे, और आपको प्रमोट करके टेक्नीशियन 2 बनाएगा आफ्टर 2 इयर्स। नाउ इसके बाद आप आ जाएंगे लेवल 4, दिस इज द 2800 ग्रेड पे, और ये हो जाएगा टेक्नीशियन 1। दिस इज द टेक्नीशियन 1। टेक्नीशियन 1 की जो अभी इसमें टेक्नीशियन 1 का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए भी रेलवे बोर्ड की चिट्ठी है कि यहाँ पे आप प्रमोशनल में नो टाइम लिमिट है, नो टाइम लिमिट, कभी भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टिंग वैकेंसी और सीनियरिटी, अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टिंग वैकेंसी एंड सीनियरिटी। आपका जो सीनियरिटी रहेगा और जो वैकेंसी रहेगी उसके अकॉर्डिंगली आप टेक्नीशियन 1 बन पाएंगे। और यहां पर भी आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अकॉर्डिंग टू रेलवे बोर्ड की चिट्ठी, यहां पे डायरेक्ट थ्रू आरआरबी से भी ले सकते हैं, थ्रू आरआरबी से भी
लिया जाएगा। पहले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टेक्नीशियन 2 और टेक्नीशियन 3 की होती थी, टेक्नीशियन 1 की नहीं होती थी। अभी टेक्नीशियन 3 के बाद टेक्नीशियन 1 का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह जो भी है वो आरआरबी का अपना नॉर्म्स के हिसाब से रखा गया है। 2800 ग्रेड पे में टेक्नीशियन 1 में जब आप आ जाते हैं, इसके बाद आपका लेवल चेंज होता है। यहाँ पे 2 चीज मिलेंगे, मैं पहले कर दूं। एक तो मिलेगा सीनियर टेक, दिस इज द लेवल 6 ग्रेड पे 4200। ग्रेड पे 4200 में आपको सीनियर टेक मिलेगा 100% सीनियरिटी बेसिस। इसमें कहीं कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं होती है, कोई ट्रेड टेस्ट नहीं होता है, नहीं 100% सीनियरिटी बेसिस पे आपको सीनियर टेक मिल जाएगा एंड आपकी ग्रेड पे हो जाएगी लेवल 6 में 4200। अब यहां से आने के बाद आप में परिवर्तन आएगा। क्या परिवर्तन आएगा? यहां से आने के बाद ये जो 4200 ग्रेड पे सीनियर टेक है, यहां पर आपके आर्टिजियन ग्रुप खत्म हो जाएगी। नाउ आप फिर लेवल 6 ग्रेड पे 4200 सुपरवाइजरी ग्रुप में आ जाएंगे। दिस इज द जेई, जूनियर इंजीनियर इसको बोला जाए। जूनियर इंजीनियर इधर सिग्नल हो जाएंगे और इधर टेली हो जाएंगे। तो यहां पे पहुंचने के लिए, ये जूनियर इंजीनियर सिग्नल और टेली पहुंचने के लिए आपके 2 चैनल हैं। एक डायरेक्ट टेक्नीशियन 3 से डायरेक्ट पहुंचेंगे, दूसरा सीनियर टेक से डायरेक्ट पहुंचेंगे। आप टेक्नीशियन 3 से भी जा सकते हैं, सीनियर टेक से भी जा सकते हैं। सीनियर टेक से जो इधर जाएंगे, दिस इज द नॉन सिलेक्शन पोस्ट, यानी प्योरली बेसिस पे EAR, आपके सर्विस सीट और आपकी सीनियरिटी के हिसाब पे छोटा मोटा नॉमिनल एग्जाम लेके आपको सीनियर टेक से जूनियर इंजीनियर में प्रमोट किया जा सकता है। एंड अगर आपने 3 इयर्स टेक्नीशियन 3 यानी 1900 GP में नौकरी कर लिया है, टेक्नीशियन 3 1900 GP में 3 इयर्स मिनिमम नौकरी कर लिया है, देन आप सिलेक्शन पोस्ट थ्रू LDCE, एक एग्जाम कंडक्ट होती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, उस एग्जाम को पास करके प्योरली मेरिट बेसिस, इसमें कोई सीनियरिटी काम नहीं करता है। जो जितना मार्क्स लाएंगे, जो मेरिट में आएंगे, वो प्रमोट होगा और आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। टेक्नीशियन 3 से आप ग्रुप डी से टेक्नीशियन 3 3 साल में, टेक्नीशियन 3 से 3 साल बाद डायरेक्ट प्योरली मेरिट बेसिस पे जूनियर इंजीनियर बनने के बाद आपके पास जो लेवल 7 का आ जाता है, लेवल